हेलो एवरीवन, और कैसे आप सभी। नमन नमन नमस्ते सबको, स्वागतम। आप सभी का स्वागत है फिर से होराइजन फोरबिडन वेस्ट में। अब आप लोग का होगा कि अरे एएमजी भाई, होराइजन फोरबिडन वेस्ट तो कंप्लीट कर दी थी ना हमने, है ना। आज फिर से कैसे स्ट्रीम कर रहे हो उस गेम की? हमने तो गेम खत्म कर दी है। जो गेम खत्म कर चुके हैं हम, उसकी दोबारा स्ट्रीम कैसे कर रहे हो, है ना। क्वेश्चन ये उठ रहा होगा ना तुम लोगों के दिमाग में। तो जब ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करता हूँ, सीधा सीधा बता देता हूँ कि ये होराइजन फोरबिडन वेस्ट तो है, पर उसकी डीएलसी है बर्निंग सोल। ठीक है, तो ये डीएलसी होने वाली है होराइजन फोरबिडन वेस्ट की। तो तैयार हो जाइए लोगों, रोमांचक सफर के लिए, फुल एपिसोड के लिए। रोमांचक सफर बोल रहा हूँ तो समझ जाओ यार, फुल एपिसोड होने वाला है। फुल एपिसोड मतलब पूरा सफर भाई, 9 किश्तों में सफर, पूरा सफर। ठीक है, तो ये डीएलसी 4.5 घंटे की है बस। ठीक है, तो समझ जाओ तुम लोग ये फुल एपिसोड कितने घंटे का होने वाला है, 4.5 घंटे का। ठीक है, तो चलिए लोंडो शुरू करते हैं आज की हमारी ये डीएलसी होराइजन फोरबिडन वेस्ट की। हमने मेन स्टोरी खत्म कर दी है, कर चुके हैं मेन स्टोरी। हम तुम लोग को पता ही है, परसों खत्म करी थी ना शायद हमने, हाँ परसों खत्म करी थी हमने मेन स्टोरी, मेन गेम होराइजन फोरबिडन वेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसकी डीएलसी खेलने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डीएलसी में क्या स्टोरी होती है और क्या अलग होता है डीएलसी में, है ना। बाकी जिसने नहीं देखे हैं होराइजन जीरो डॉन के एपिसोड भी और होराइजन फोरबिडन वेस्ट के भी, तो जाके देख लो सबसे पहले। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये गेम क्या है और इस गेम में क्या स्टोरी है और ये एलोय कौन है। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमेशा की तरह। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमेशा की तरह। ठीक है, तो जाके चेकआउट करना, देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। हाँ, तो बिना किसी का टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की हमारी ये डीएलसी फुल एपिसोड। ठीक है, तो रेडी हो ना लोडो फुल एपिसोड के लिए, क्योंकि फुल एपिसोड होने वाला है। तो इसी में हम स्टार्ट करेंगे, इसी में हम खत्म भी कर देंगे हमारी डीएलसी को। ठीक है, तो रेडी हो जाइए लोडो रोमांचक सफर के लिए मारिए एलोय का। ठीक है, आगे का जो सफर रह गया था गेम खत्म होने के बाद होराइजन फोरबिडन वेस्ट का, ठीक है, अब बाकी का सफर इस गेम में आएगा। ठीक है लोडो, तो चलिए लोडो शुरू करते हैं। अब बिना किसी का टाइम वेस्ट करे, बहुत टाइम खा गया मैं तुम लोगों के, 5 मिनट खा गया मैं ये बोलते बोलते। और बताना पड़ता है ना लोडो, क्योंकि फिर कोई बोलेगा कि अरे भाई तू डीएलसी खेल रहा है, मेन गेम खेली थी क्या। अब तुम लोगों को पता ही है भाई, मेन गेम खेली है जब तो हम डीएलसी खेलने जा रहे हैं, है ना। डीएलसी तो जब ही खेल सकता है ना इंसान जब मेन गेम खत्म करियो, मेन स्टोरी खत्म करियो, है ना। तो डीएलसी जब तो हम खेलने जा रहे हैं तो खेलते हैं डीएलसी। ठीक है, जैसे गॉड ऑफ वॉर और रेसिडेंट एविल की हमने डीएलसी खेली है, बाकी गेम्स की भी डीएलसी खेली है, तो इसकी भी खेलते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग मेरे को गालियाँ देना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोग। मैंने एलोय को सही जगह पे रख लिया है, रख लिया मतलब सही जगह पे खड़ा कर दिया है, जहाँ से हम स्टार्ट कर सके हमारे सफर। ठीक है, तो चलिए लोग शुरू करते हैं। बहुत कुछ होने वाला है इस डीएलसी में, याद रखना काफ़ी हट के स्टोरी जा सकती है ना। बाकी जो जो करेक्टर हमें देखने को मिले थे मेरी स्टोरी में, वो तो देखने को मिलेंगे। और जिसने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं, मतलब होराइजन फोरबिडन वेस्ट के एपिसोड नहीं देखे, जिसने मेन स्टोरी के मेन गेम के, उसको घंटा समझ नहीं आएगा। तो तुम लोगों ने तो देखे हैं, तो तुम लोगों ने स्टार्ट करते हैं। चलिए लोग शुरू करते हैं। I'll be waiting at Tilda's. It's proven to be a useful headquarters for my inquiries into the Zenith base. And don't worry, I haven't disturbed her precious art. Fine. I'll be there when I can. There. तेरा साइलेंस सत्य से बातचीत, बाकी थंबनेल बहुत मस्त लग रहा होगा तुम लोगों को, है ना। Tilda tried to reel you in. What was her proposal? That together you could save the planet, just as your precious genetic mother always wanted? I believe the old ones called that a bait and switch, luring you with the promise of a vibrant new world, when in reality,
It's doomed to be cracked open by Nemesis and scoured of life. If you're trying to get a rise out of me about Tilda, it's not gonna work. And if you really believed we have no future, you wouldn't be here. And perhaps I'm just waiting to see if you can once again achieve the impossible. Speaking of which, my preparations for Nemesis have revealed a new problem. I've been searching the remains of the Zenith base for any data that could help us. In doing so, I discovered that 13 of our spacefaring friends descended to Earth from the Odyssey. But we only found 12 corpses total, including Verbena at the biotech lab. Your math is impressive as always, but yes, it appears that one got away. His name is Walter Londra. In the 21st century, he was an aerospace magnate, but also a bit of a celebrity. I'm sure I don't have to tell you that he's far too dangerous to be allowed to roam free. You need to find him and deal with him. You said Walter Londra was a bit of a celebrity. What does that mean? Although he made his money in aerospace, he put vast sums into the production of holographic entertainment. In fact, his wife was a famous actress. The two of them were often featured in tabloids and other media. Tabloids. A type of news outlet that tracked the personal lives of celebrities, allowing legions of fans to live vicariously through the rich and famous. Oh. Yuck. So where do you think Londra went? The coast, far to the south. An area racked by tectonic shifts and volcanic activity. The few Tenakth who have ventured there refer to it as the Burning Shores. But 1,000 years ago it was called Los Angeles, a hub for the technology and entertainment industries. Londra's space mining company Heaven Sent was headquartered there. It stands to reason he would retreat to familiar territory. I'll send you the coordinates. So, are you ready to track down our rogue Zenith? Okay, to the Burning Shores then. Proceed with caution, Aloy. I suspect Londra is even more devious and resourceful than the other Zeniths. Oh, silence. If I didn't know better, I'd think you were actually concerned about my safety. Aloy? I hope I haven't caught you in the middle of fighting a giant machine or something. Hey, Beta, I'm actually on my way to the Burning Shores. Oh, right. Gaia and I heard about your mission from Silence. Be safe, okay? We'll be here if you need us. Will do. Thanks. This is it. Londra's headquarters shouldn't be far. Okay, that can't be good. Shit! Shit. Oh shit! छबीले उड़ रहे थे हम यार. अरे भाई सब गेम स्टार्ट होते ही भाई एक्शन भाई डीएलसी स्टार्ट होते ही ये कौन खड़ा है भाई Were you actually flying just now? Yeah, just not my best landing. लैंडिंग अच्छी नहीं थी हमारी Damn, more machines. ये लोंडिया कौन है भाई से दोस्ती यारी हो जाएगी लग रहा है Stay back. I'll handle this. Hold on, I can help too. हम भी मदद कर सकते Let's हैं see what you got. तेरी तू पीछे रहे मैं हैंडल करूंगी अलोय ने बोला कि मैं भी हेल्प कर सकती हूँ भी हैंडल कर सकती है हमें बोलेगी हम दूसरों को बोलते हैं हम हैंडल कर सकते हैं Takes one hit to detonate. Yeah, okay, got it.
someone. बे तेरी Let's see who takes it. Here's to the hunt! ओके बता दिया हमने Oh, you know how to hold your own. The name's Seyka. Aloy. I could, say the same about you. You have a focus. दोनों एक साथ बोले So you're Quinn. You're not exactly like any diviner I've met. How do you even know that? I'm sure you have a lot of questions, but first... Just one for now. I saw you before you crashed, flying on a sunwing. It didn't look like you knew about that tower, which means you're new. So what brought you here? I'm looking for someone. There's a ruin. On the hill northeast of here, that's where I was headed. The ruin on the hill. You mean Starlight Rise? You know it. Is there another way to get there? Maybe. But first, we're gonna have to do something about that tower. I think we can help each other, Aloy. The tower's not far from where my people made camp. I can show you the way. Hold on. You said we can help each other, but what exactly are you doing here? Let's just say, I need that tower dealt with too. Come on. This way. Follow me. We'll have to take my skiff to get to the settlement. What were you doing out here anyway? The skiff's rudder is a bit off. I was after some parts to fix it. And sometimes, you just need to hunt alone. Here she is. I just need to attach this component I picked up. Hold tight. I've seen a boat like that before. Me and a gearhead back at the settlement roped it together. Works well enough. That'll do it. Skiff's good to go. Hop in. Oh no. Not another one. Whoa! Like I said, there's no getting to Starlight Rise so long as that tower's there. ओके Okay, casting off. Huh. Sure beats rowing. I've had a lot of time to improve her design. How long have your people been here? About a year, I think. We hit this massive storm crossing the Great Ocean. Lost half the fleet and our bearings. It was a miracle we even made it to these shores. We've been stuck here ever since. See. I'm sorry to hear that. Just how many of you are left? Not as many as there should be. We've had other troubles since the shipwreck. And some of those remaining aren't much help.
Sounds like you're not thrilled to go back. Bringing back an Outlander is certainly going to complicate things. It'll be fine. Just follow my lead and let me do the talking. If you say so. That's it on your left. Fleet's End. Uplifting name. We weren't in great spirits when we made landfall. Okay, here we go. Further. May I be dismissed? No. You will remain here until the traitor returns. You! Here we go. Sorry. One act of treason breeds another, it seems. Stealing a diviner's focus, leading a barbarian into our midst. Where's the Quinino? Arrest them both. Remove their focuses at once. Arrest us. This is a matter for the Admiral, not a compliance officer. By all means. It's true. Seyka stole the focus. Who's the barbarian? She's done for. Things seem kind of tense around here. It's not our best day. Admiral Garrett! It's as I told you, sir. The proof is now before your eyes. A soldier dared to don a diviner's focus. The eye that reveals the legacy. But Seyka did not stop there. She brought a barbarian among us. In direct violation of Confidentiality Clause 3A. Protocol states that these... I might be our last chance at finding our missing people, sir. Diviner Vi's focus showed me his last moments. He found a clue. The ruin on Starlight Rise. There's evidence our people were there. Hunter's headquarters. Now we have no means of safe passage. Not in our current situation. But she might have another way. Remember the law, sir. Focus is for a diviner. No one else. Seyka's actions are indeed concerning. And there will have to be a reckoning. But finding our lost crew is paramount. If Seyka has a chance of bringing them back, our course is clear. Even compliance must recognize that. I will allow it. Seyka and the Outsider are free to pursue this lead. But, sir, if... Outlander, I'd like a word when you have a moment. Damn them. You okay? I shouldn't have said that. It's just that... my sister is one of the missing. Not only that, she's our last navigator. Our only means of getting home. I've got to find her. Even if it means using a forbidden relic. Meanwhile, Rang and the others act like I'm the problem, when in reality, I'm the only one looking for a solution. Look, I understand. Maybe more than you know, but for now, I think we need to calm down I and am just... calm.
You're right, of course. Getting upset isn't going to help. Okay. We both need to get to the place you call Starlight Rise. But that tower seems like it knocks anything nearby out of the sky. Out of the water, too. It fires at any watercraft in range. Oh, great. Well, it seems to me you've got some kind of plan in mind to deal with it. Maybe. Between the two of us, there might be a way. Well, you're a good fighter, that's for sure. But beyond that, I don't know much about you. There's not much to tell. Nothing special about me. Except my sister is pretty well known among my people. You don't seem so ordinary to me. I was just a petty officer until we ran aground. But we lost a lot of midshipmen and lieutenants to the storm and the wreck. And now even more of them are missing. So I've been trying to step up and help the Admiral. It took a lot of guts putting on that focus. Seems to me he needs more like you. Huh. Tell that to Rang and his toadies. So your sister is a navigator? More like the navigator. The only Quen who can steer by the stars without instruments. She reads the sky like a scroll. Knows every constellation by position, no matter how much it spins around up there, which means she's been an Imperial favorite ever since her first exam. One of the fleet's most precious assets. And now she's gone. She and the others just disappeared? After we made landfall, the hard way, the Admiral sent out scouting expeditions with the very few boats we had left. Not one of them returned. I don't know what happened to them all, but I do know it has something to do with that tower. And Starlight Rise. We're agreed on that. You think there's a way to do something about that tower? If we want to reach Starlight Rise, we have to try. I was able to approach the tower on foot, but I couldn't get close enough to shoot at it or anything like that. With the right help, though... Show me the way and we'll give it a shot. You'll probably want to resupply first. You can use my skiff if you need to hunt for resources. Just stay south of the settlement. The tower can't hit that side. I set up some buoys to mark its radius. What are you gonna do? I'm gonna go clear my head. There's a bridge that leads to the ruins where the tower is mounted. I'll wait for you on the other side. Hold on. There's one more thing. The Quen here, all of this. You were part of a larger expedition, right? Headed for San Francisco? That's how you know about us. And you've seen the others, haven't you? And they're alive. Most of them, yeah. I can put you in touch with them, but we should find your missing people first, right? They're alive. This is great news. But yes, you're right, it should wait. If we tell everyone now, it'll just be a distraction. So for the sake of the missing, we have to keep the focus on them. All right then. I'll see you on the other side of the bridge. टोरंटो में मिसिंग Might not be a bad idea to resupply before I meet Seyka. Or I could explore a little with her skiff first. अब बोल लो एलोय टोरंटो में सबसे पहले मिसिंग लोगों को ढूंढना पड़ेगा ठीक है पहले लोंडिया से मिलते हैं तो पहले अंकल के पास जाएंगे मतलब लोंडिया से मिलेंगे फिर जाके फिर से ये लोंडिया मेरे को इतनी खास नहीं लगी देखते हैं क्या होता है इस लोंडिया के सीन वैसे तो मेरे को पता है लोंडो सब ठीक है मैं भोला बन रहा हूँ जान के ठीक है पता हो के भी सब देख वॉचिंग कितनी सही आ रही है आज होराइजन 4 बिटन में वॉचिंग सही आती है भाई 58 वॉचिंग दिखा रहा है थंबनेल भी तो मस्त है अरे कुछ कोई के तारीफ कर रहा था पीएनजी भैया थंबनेल बहुत अच्छा बनाया है आपने अरे थैंक यू शिल्पा थैंक अलोय की वजह से बन रहा है थंबनेल अच्छा गेम अच्छी है तो थंबनेल भी अच्छे बन रहे हैं
चूज करूं? Should fit you well. चलते हैं आगे। अलोय ने उससे बोला मैं सबसे पहले फिर तो जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढना चाहिए। तो साइका जो नाम आई है, साइका नाम की जो लड़की आई है, वो बोले कि हाँ ये तो गुड न्यूज़ है, अगर वो लोग जिंदा है तो हमें ढूंढना चाहिए उन्हें, तो उससे पहले वही काम करना चाहिए उन्हें। साइका नाम है ना, मुझे क्या नाम है, साइका ही तो है। Okay, maybe it's time to meet up with Seyka and head to the tower. सेका है, सेका, साइका नहीं सेका। Aloy, over here. अरे ये तो रही, पूजा कलेक्ट करने दे मेरे को चीज़ें। Hey, I'm here. So, how do we get to the tower? These trails will lead us to it. Take your pick. चलो Okay, let's go. लोग कहोगे एलोय का ये बना दिया बीएमजी भाई। अरे भाई हैवी कवच की जरूरत है भाई, हैवी कवच की जरूरत है। So you know a lot about my people, but I barely know anything about you. Like who you're looking for at Starlight Rise? He's a, fugitive. Come on. That's all you got? Let's just focus on getting to the tower. So mysterious. ज़्यादा बातूनी है ये, तीखा लड़की, चाइनीज सी नेपालन सी बातें बना रही है। तो एलोय कह रही है तो और टावर पे जाने की फोकस करते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं अभी टावर पे। हमने अच्छा बनाया तो इसलिए वॉचिंग भी ज़्यादा आ रही A है water शायद। wing. The other day I saw the tower shoot down an entire flock. Poor things crashed into the sea south of Fleet's End. I've never seen one before. That tower's gotta go. ये जगह लास्ट ऑफ अस की तरह ही लग रही थी ऊपर से We're जगह getting close बिल्कुल to the वैसी लग रही tower. है। Last time I was there, I didn't get very far in. We'll find a way. ढूंढने का रास्ता। There's some kind of machine growth. Haven't seen that before. Kinda looks like an egg. तेरी अंडे की तरह लग रहे हैं। Machine. चल ले, चल ले, बस चल ले, अब मरेगा, चल ले। भाई More of those eggs. Okay. Those definitely weren't here last time. Yuck. Those eggs are everywhere. Whoa! Big ugly machine alert! We'll have to deal with it to get into the tower. Let's see what you got then. You're on. Make a move. ये अरे तेरी मेरे पास कैसे आ गए तू? जोरदार लग रही है पहले भाई, ये पहना दिया मैंने। कुछ तो चेंज करना था ना, लोंडो बेचारी पूरी गेम में एक ही कपड़े पहनी रही।
मैंने पहना के रखे, इन कपड़ों में ढंग की लग रही थी। मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। DLC है भाई, DLC में थोड़ा तो चेंज करना चाहिए ना, लगे कि हम हाँ DLC खेल रहे हैं। अरे चल बच्चे जी मेंढक है भाई ये तो। Whoa, we've got a jumper. तो भाई It's done. भाई इसमें तो खतरनाक नहीं आ रहे तो ज़्यादा ही। चल यार तो भाई साहब ओए ओए इसे तो दूर हूँ मैं, मुझे पता है। क्या लो वर्मा भाई, मैं भी आ गया। वर्मा भाई कह रहे भाई लेट क्यों कर देते हो हमेशा, वही तो। कोई ना, बात हो गए भाई, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। क्या मैं अभी आई हूँ? अर्पिता कह रही है, गरिमा कह रही है तू कहाँ रह गई थी अर्पिता? मैं तो स्टार्टिंग से थी, स्टार्टिंग से हूँ। अर्पिता कह रही है अपने बंदे से बात कर रही थी इसलिए लेट हो गई। हाँ भाई, अरे और बात कर लेती अपने बंदे से। चल चल Down it goes. Yeah. Good fight. Come on. The entrance I found is this way. Let's get going. I'll have to warn our patrols later. Doubt that machine was the only one of its kind. Feels like every day there's something new that's trying to kill us. I know the feeling. क्या Through क्या here. रोशनी है? छदर से जाना है? वाओ भाई Just वाओ, gotta get across. ये चीज Think बता you can रही make है। it? Watch. क्रॉस करना, ये करना, वो करना। तो कह रही देखती जा तू, दिखती जा बेटे तू देख, अब तू देख बेटा। I'll wait here for you. आ रहे ना, रुक जा ना। This is as far as I got. I couldn't find a way to get further up. Let me take a look around. ये जा जा एक खिज्जा रे। ओ भाई सब कुछ गया भाई, कुछ ज्यादा ही कर गया भाई सब। There we go. You made that look easy. बड़ी तारीफ करे जा रही है About the नोंडिया। fugitive, I need to know who we're dealing with. It can't be a coincidence that he and my people are both at Starlight Rise. His name's Walter Londra. He's a Zenith. It's what the Quen would call a living ancestor. A living ancestor? But that would mean he's been alive for centuries. Yep. Tides take me. You're serious.
After you. क्या आलिया कह रही है तारीफ तो करेगी ये सीखा एलोय की, क्योंकि एंड में एलोय को मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती। तुम चुप There you go, रहो, Seyka. मैंने भी खेल रखी है ना गेम, मैं चुप हूँ ना। मैं नहीं दे रहा ना स्पॉइलर रोंडो को, मैं नहीं बता रहा कि आगे क्या होगा आगे नहीं होगा। चुप हूँ ना मैं भी बोला बनकर खेल रहा हूँ ना, तुम भी बोला बनकर देखो। Think you could get that vent open? स्पॉइलर नहीं देना चाहता भाई, बोला बनकर खेल रहा हूँ, जैसे मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। I gotta be in range first. हर गेम को मैं बोला बनकर खेलता हूँ, मुझे पता रहता है क्यों क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं तुम भी बोलियो कि देखो, मत दो स्पॉइलर, मत बताओ। So, the other Quinn I met, they, recognized me. I look like one of your ancestors. But I guess since your diviners are gone, none of you people here made the connection. Oh. Yeah, those of us left are just sailors and soldiers. She flies, she fights machines, and she has fancy moves. Wish you'd come along earlier. Might have gotten more done by now. I bet you must be pretty important to your tribe. I grew up an outcast, actually. Oh. I'm sorry. I'm better off without them. And from what I saw back at the settlement, maybe you would be too. I am one of the chosen people. Not some weak-kneed sailor who abandoned ship when the seas get rough. Okay, never mind. मुझे भी पता रहता है कि आगे क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, बट मैं चुप रहता हूँ, बोला बनकर खेलता हूँ। उसी में ज़्यादा मज़ा आता है यार, देखने वालों को भी और मेरे को खुद खेलने में भी। अनजान बनकर खेलो है क्या, क्यों ओवर स्मार्ट बनना दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कि हाँ लोंडो ये होगा। Nice shortcut. I'll find another way over. जो देख रहे उन्होंने नहीं खेली गेम, उनका तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना। खेलने वाला भी अनजान बनकर खेले तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता। I think we're almost at the top. Then we can find a way to shut the tower down. Sounds like the tower found another target. देखने वाले अनजान है तो खेलने वाले को भी अनजान रहना चाहिए। Can't wait to shut it down. क्या ओके को ना ओके, ये पता है तुमसे रहा नहीं जा रहा क्योंकि तुम्हें पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। Made it. This definitely looks like something Landra would have built. ये ओपन है। Okay. But how do we stop it when part of it's way up there? कोई तो Let's रास्ता take a होगा। look around. हेलो कह रही आसपास देखते हैं, इसको बंद करने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा। Find something? Maybe. मिल सकता है कुछ, पूजा सबर कर ले। पूछ रही है कुछ मिला नहीं मिला। यस इधर हो सकता है कुछ, ये चमक रहा ना ये होगा, तो यहाँ जाते हैं। ये पूजा है ऊपर जा रहा है ना वो, यहाँ आ गए। अबे नहीं चार्टेड वाला सीन मत हो भाई। ये ऊपर की साइड है एक और ना, देखा सही जा रहा हूँ मैंने, सही जा रहा है। ऊपर की साइड है यस, ये ऊपर और ऊपर और ऊपर ढेर सारे भाई यहाँ पे, एक तो पता नहीं क्या इससे पोखरान से चल रहे हैं। कहीं तो होगी जड़, रुक जाओ।
भाई भी कह रहे पता है ले ली। This might be some Yeah. kind of access node. एक्सेस नोड लग रहा है तो। It's coming down. Yes. Aloy, I truly hope you've enjoyed this tower. I set it up just for you. Oh, great. A recording from Londra. Let it be a reminder that unlike my former colleagues, I'm one step ahead of you. That doesn't look good. Getting ready to fire at us. Get to cover. पता था मुसीबत होएगी। लोंड्रा बोला ना सारा, मैंने तेल सेटअप करा था स्पेशल एलॉय। How are we supposed to stop this thing? Let me scan it. Shit. Shots fire. It's got a power core on back. Over here! I gotta get through this switch. Shiny, hovering. Just hurry. You need a break? There. Out and up. Aloy! Don't know where you went, but I hope you're getting close. I'm taking a lot of heat over here. Hang in there, Seyka. Okay, time to hit that power core. I think it knows you're up there, Aloy. Take cover. Come on! Fire at me! Not her! Get it! It's distracted. Do what you need to. There. Got it! Whoa! You okay? Yeah, still breathing. I see another core on the front! On it! Keep distracting it! Another core. Yes! One left! Gotcha! I'm dead! That thing's sights back on you! Take that, you flaming pile of scrap! क्या वर्मा भाई क्या बोल रहे हैं? अलग दीदी नहीं आई तो बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो हंसी मजाक करती रहती है। अलिया बोल रही है अभी तो फिलहाल उसकी फैमिली उसके साथ हंसी मजाक करने में लगी है। भाई लो वर्मा भाई हो गया हंसी मजाक, वो गेम पे ध्यान दो। Well, that didn't go exactly how I thought it would. It turned out okay. And now your machine can get us to Starlight Rise, right? Yeah. I saw it fly off when I crashed. I should be able to call it back. One step closer to finding my sister and the living ancestor you're after. But I should probably report to the Admiral first, give him some assurance that we've made progress. Okay. I'll meet you back at the settlement then. You know, I'm kind of glad you tagged along.
लोंडिया इतनी भी ऐसी खूबसूरत नहीं है कि एलोय को इसमें इंटरेस्ट आ जाए। और एलोय तो भाई सख्त लोंडिया भाई हमारी, सबसे बड़ी बात भाई एलोय ने इतनी लोगों को रिजेक्ट करा है भाई। That's for sure. And with the tower down, I could check out the area before meeting up with her. Maybe stock up on some resources while I'm at it. ये कह रही सिक्का दूसरों की तरह नहीं है। हाँ अभी से फीलिंग जाने लगी। मुझे एक बात बता लो, तूने इतने लोगों को रिजेक्ट करा, इतने लोंडो को रिजेक्ट करा, इतने अच्छे अच्छे लोंडो को रिजेक्ट करा तूने, खूबसूरत खूबसूरत राजा राजा लोगों को, ठीक है, और तू इसमें इंटरेस्ट ले रही है सिखा में। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी लोंडिया। पता नहीं भाई एलोय जाने भाई, कहते हैं ना तो खूबसूरतों को ठुकराया और दिल किस पे आया, भूतनी पे। यही हाल है भाई। You mean the barbarian from the east? Is it different book? देखते हैं भाई कैसे इंटरेस्ट जागता है लोगों को, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं भी ये सब बातें नहीं करना चाहता हूँ, बट निकल रही है मेरे मुंह से। स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ मैं। This easy? Is it time to head out? रुजा रुजा आ रहे सिखा रहे हैं, करते बातचीत। Okay, so shall we get going to Starlight Rise? Yeah, let's go. So what now? हेलो एक कमाल दिखा रही है भाई इससे अपना। ये भाई साहब हैरान हो गई भाई लोंडिया। भाई साहब हेलो को क्या समझी है, देख ले हीरोगिरी, देख ले एक सीटी में देख ले। हेलो कह रही चल। ओ भाई हैरान रहेगी कैसे। ओ भाई साहब Up you go. चले। Something wrong? क्या कुछ गलत है? Of course not. तेरी नहीं भाई साहब, इसको समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, इसको हैरानी हो रही है। हेलो ऐसे रही है, Snug. Manage. Oh shit! तो कह रही मैनेज कर लेंगे। ओ भाई साहब हेलो तो भाई एकदम लोंडो की तरह, हीरो की तरह, लोंडो हीरो की तरह भाई साहब हरकतें कर रही है। ये कुछ हो रही है भाई कैसे। Hold on back there. मुझे पता था मुझे कंट्रोल करना होगा। Starlight Rise is just across the water. I guess we'll see if this living ancestor has something to do with my missing people. Look, once we get into the ruin, we might find data that your focus model isn't able to make sense of. I'm sending you an update, so you'll be able to see what's going on. Oh, thanks. You sure seem at ease with the focus. Is that why your tribe made you an outcast? No, not exactly. They cast me out when I was born. In fact, everything I've done, including learning to use a focus, was in spite of them. Sounds familiar. It gets easier, you know. What? Clinging to the back of a sunwing? That too. Just worry about steering this thing, okay? Sure. Down on the beach. Those are some of our missing scout boats. And it looks like there's a lot of construction on the hillside. That's what Diviner Vi saw. Let's try to retrace their steps then. I'll set us down. Solid ground. Thank the ancestors. Okay, we should follow your people's trail. See if we can figure out why they were here. Looks like they left some equipment behind. Wouldn't want to be on the wrong end of this. Quen Navy weapon. We use them to build rope bridges and perimeter defense. I think I can climb up there now. भाई एलोय इसके सामने ना स्टाइल मार रही है, खूब इंप्रेशन जमा रही है भाई। मैं समझ गया, सही है भाई सही है। ये डायरेक्शन में जा रही है भाई ये डीएलपी। The ballista tore straight through the machine's armor. This bolt looks pretty sturdy too. My people had to fight while they built all this.
But they kept going anyway. Let's stay on their trail. Our people had a big operation here. Why? I'm not sure. I bet Laundra's involved. Well, looks like they set up some ladders to get up to that excavation. But the path's broken now. We'll have to make our own way up. We can use the bolts as climbing points. Good idea! That's enough! Heading up to take a look! Huh. Nice climber. I better catch up to her. वर्मा भाई कह रहे हैं हमारी एलॉय बेस्ट, वही तो मुझे भी कुछ खास नहीं लगी ऐसी का। तमाल भाई भी यही कह रहे हैं, एलॉय तो हीरो लड़का बन रही है, क्या स्टाइल है, वही तो शिल्पा। ऐसा लग रहा था मैं एलॉय को नहीं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था किसी लड़के को देख रहा हूँ। अभी स्टाइल मारते हुए नहीं देखा मैंने एलॉय को। There's a door up there across the chasm. Let's see if there's a way up. हंस कैसे रही थी भाई पीछे बैठी तो, अलग ही मुस्कुराहट थी भाई, अलग ही मुस्कुराहट, जैसे टपरी लौंडे वेंच एटीएम पे अपनी बंदी को बिठा के कुछ नहीं होते वेंच, तो वैसे ही कि ब्रेक मारते तो बंदी ऐसे तेज की चिपक जाती है आगे को आके, ब्रेक मार मार के चलाते छपरी लोग। I better leave this alone for now. I've got to get Seyka up here first. हम लोग को आगे बीएमजी भाई यार एलॉय हमारी छपरी तो नहीं है यार, छपरी से कंपेयर कर रहे हो छपरी लोंडो से हैं, माना कि थोड़ा इसका स्टाइल ऐसा है आदिवासी की तरह रहती है, पर छपरी तो नहीं है यार एलॉय हमारी। Use this ballista, but the crane won't stay up unless I hold it in place. Hold the crane in place. Let me lift it. I'll hold it in place while you shoot. ये बात भी सही है लोंडो, एलॉय का हमारी खुद का स्टाइल है, खुशी तो देखते हैं भाई साहब। ओ वाओ, आ रही है भाई, आ रही है, और खींच और खींच, हम ये चलाएं रूला। Should do it. Let's get climbing. Okay, letting her go. That thing was heavier than it looked. ये देखने से ज़्यादा भारी लग रहा है, सॉरी देखने में इतना भारी नहीं लग रहा था, वैसे ज़्यादा भारी है। Making progress. Yeah, right into the spooky abandoned ruin. दिमाग शॉट हुई सेका, जो भी नाम है सेका, तो सेका बोलूँगा भाई, सेका। Your people put a lot of effort into getting in here. Almost like they were after something. Or someone had a knife to their throats. सेका Find your sister. Don't worry. You don't have to comfort me. No. I'm fine. ओले भाई तब तो लौंडी है भाई सेका तो। Want to help? हेलो कह रही है चिंता मत कर, हम तेरी बहन को ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो कह रही है तू मेरे को ना कंफर्ट मत कर, ठीक है, मेरे पे दयालुपंती मत दिखा, मैं ठीक हूँ एलोय, ठीक है। तो एलोय कह रही है मैं तो बस हेल्प करना चाहती हूँ भाई, सब तो ढूंढ है तो सिखा, तो ये ना पिघलने वाली है एलोय, तो और किसी पे ट्राई मारना पड़ेगा। जहाँ पे लोग ट्राई मार रहे थे वहाँ पे तूने हाँ ना करी, एलोय जाने भाई। अब दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है, वेंचो कहीं पे भी आ जाता है ना। एलोय का दिल हो चाहे तुम्हारा दिल हो, चाहे तुम्हारा दिल हो भाई, किसी का भी हो, बट इतना पागल नहीं होता वेंचो, इतना पागल नहीं होता कि वेंचो इन जेंडर पे आ जाए। Stay alert. Why? No machine stopping me. अंग्रेज लोगों ने ठान रखी है क्या, अंग्रेज लोगों ने वेंचो जो अच्छी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी वेंचो उसको हम लेस्बियन बना देंगे। मैं सही है भाई, सही है। एली भी इतनी अच्छी थी वेंचो, उसको भी ऐसी बना दिया था। That sign. This is definitely Laundra's old headquarters. Down there. What is that thing? Let's find out. दिखा एलोय की अकी
All this He- must have been brutal to सीखा excavate. सीखा सखी एलोय की सखी। तुम लोग क्या लगता है लोनो? देखते हैं गेम देखते देखते पता चलेगा वो तो, अभी एज्यूम भी नहीं कर सकते हम कुछ। It's a prototype for a rocket engine. It never got off the ground. The way it was designed made it too dangerous. Dangerous how? Like it would poison everything in a 1,000-mile radius if it got used. Oh, Let's keep moving. so this engine, it was for traveling to the heavens? The diviners say the ancestors could do that. Yeah. Londra launched ships into space to search for resources. सॉरी Why dig all this out now? We should keep following the trail. Okay. तो लोंडो ये कैरी जो है Regarding the slipstream engine, my engineers tell me that even in the event of an accident, they could contain the fallout. But they don't grasp how effectively my enemies can harness public paranoia. That's the real fallout. लोंडो ये कैरी जो एक चीज है इससे हम जन्नत में पहुंच सकते हैं। तो ये कैरी हाँ लोंड्रा ने ऐसी चीजें बनाई थी कि बेंचो शिप हम स्पेस में लेके जा सकते हैं बेंचो, समझ रहे हो लोंडो? आए साहब रिसोर्सेज ढूंढने के लिए हम शिप को स्पेस में ले जा सकते हैं बेंचो। लोंड्रा इतना लोंडा नहीं लोंड्रा इतना खतरनाक बंदा था भाई, बंदा खाया बंदा है जो भी है। बेंचो शिप बेंचो स्पेस में पहुंचा दी भाई। Getting hot in here. Whoa. The ruins split in two. But the Gwen pressed on. Oh no. क्या हो गया इसको? अच्छा कोई दवा पड़ा हुआ है भाई। Crushed. It looks like some kind of construction accident. This was Lena from the galley. We weren't exactly friends, but she didn't deserve to be worked to death. वही तो। How could an ancestor do this to my people? Knowing Londra and his kind, I can't say I'm surprised. We better find a way up and across. We'll need to make a path. ठीक है। लोंडो इसने बताया कि कोई लोंडिया थी जो कि इसकी दोस्त नहीं थी, पर जो भी लोंडिया थी ये मरी हुई, Maybe we can use it. I'll shoot this time. वो डेथ तो डिजर्व नहीं करती थी। सही बात है, कोई हमारा दोस्त हो या ना हो बट ऐसा मौत तो डिजर्व नहीं करता। हमने एग्जामिन करा ना तो एलोय ने ये बताया सिक्को कि कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट लग रहा है, तो एक्सीडेंट। I made you a handhold in the bridge there. Try and get to that ballista further up. Think you can make the jump? I can reach it. Uh-oh. I can help! Keep it still and I'll shred him with the ballista! कर सकते हैं मदद, हम तो संभालेंगे भाई फिर भी अकेले, फिर भी डिपेंड नहीं रहने वाले हम। Okay. Just don't shred me. Yeah. Yeah. पहले बता रहा हूँ लोंडो एक बात कि जब ये डीएलसी खत्म होएगी ना, डीएलसी खत्म होने के बाद ना कंपेयर मत करने पड़ा था ना कि मेन स्टोरी मेन गेम अच्छी थी बीएमजी भाई, ये डीएलसी तो इतनी खास नहीं थी, ये नहीं था, या फिर डीएलसी अच्छी थी मेन गेम अच्छी नहीं थी। कंपेयर मत करना क्योंकि डीएलसी आगे का पार्ट होता है स्टोरी का, गेम का छोटू सा, ठीक है? इसलिए बाकियों की तरह चूतियापंती ना करे, कंपेयर ना करे। Let me guess. You won? You learn fast. अपनी कहानी बता रही है।
तुम लोग पता ही, मैं हमेशा बताता ही हूँ कि मेन गेम और डीएलसी को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है यार। That's a lot of lava. It's practically turned into a volcano. ये तो वही बात होगी, तुम्हें पूरा कुत्ता पसंद आया कि कुत्ता पूरा क्यूट है बट इसकी पूंछ अच्छी नहीं लगी। ये कोई बात हुई सेंस इस बात में? नहीं ना। इसलिए भाई डीएलसी और मेन गेम को कभी कंपेयर मत करा करो। ऐसे तो मेरे को गॉड ऑफ वॉर की डीएलसी अच्छी नहीं लगी थी, मैंने खेली ना। Okay, another ballista. Time to return the favor. Make a path over here! No need to yell. I've tapped you into my focus. फिलहाल मैं बोर होता रहा मैं कि बार बार हम अंदर जा रहे हैं, बार बार बाहर जा रहे हैं। Okay, now to get up there. ये चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है। Made it. Let's see where this leads. Watch What out. about- More clamber drops. I see him. It's my turn to shred some machines. चल ले। Oh, you think you can do better than me? We'll see. ये कह रही तू मेरे से बैटरी यूज कर ले क्या? एलोय कह रही है देखते हैं कौन अच्छा चलाता है। एलोय वैसे पिघल जाएगी बट वैसे नहीं पिघलेगी। You tied my ballista record. Not bad. Now, last climb. You know what to do. Yep, on it. पता है हमें क्या करना है। ये यहाँ पे पिस्तौल लगाते हैं, वहाँ पे भी लगाते हैं, चढ़ पाए। सही है भाई ये चीज। That should do it. Just gotta find my way over. भाई कार भी है भाई यहाँ पे। पहली बार गेम में कार देखने को मिली भाई, पहली बार गाड़ियाँ देखने को मिली गेम में, ये वाली गेम में। Think you can make it? Oh, just watch me. कह रही है तेरे को लगता है तू कर लेगी? तो कह रही है बस देखती रहे बस। स्टाइल देख एलोय की भाई, वॉइस एक्टर देखनी है भाई मेरे को रियल लाइफ में भाई। मैंने देखी भी थी यहाँ यूट्यूब पे देखी थी भाई, क्या कमाल की वॉइस ये और एक्टिंग भी करी है भाई। फेशियल एक्सप्रेशन ले, ये ले, वो ले भाई साहब। और गेम इसने बनाई ना जिस कंपनी की है भाई, उनका भी थैंक्स भाई। बहुत अच्छी मोशन कैप्चरिंग करी है भाई। लगता ही नहीं है भाई मैं गेम के कैरेक्टर्स को देख रहा हूँ। अरे रियलिस्टिक है भाई फेशियल एक्सप्रेशंस। तुम लोग खुद नोटिस करना कट सीन में एलोय के फेशियल एक्सप्रेशन। बाकी तुम लोग तो नोटिस कर ही रहे हो। हमने होराइजन जीरो डॉन खत्म करी, होराइजन 1 मतलब, फिर होराइजन 2 खत्म करी, होराइजन 4 बिटन, अब उसकी डीएलसी खेल रहे हैं हम। ये One lava-filled chasm conquered. You did pretty well back there. We're not a bad team. Glad you think so. I always wanted a sidekick. After you, Can't open doors without your sidekick, huh? just giving you a chance to shine. All right, let's see where my people's trail leads. मुझे ऐसा समझ नहीं आया लोग उन्हें वॉइस एक्टर क्यों कहते हैं। वॉइस एक्टर नहीं बोलना चाहिए भाई, पूरे के पूरे एक्टर होते हैं भाई, वो सिर्फ वॉइस के एक्टर थोड़ी होते हैं। पहले एक जमाना होता था कि हाँ This is so old. What could they possibly have wanted from this place? सिर्फ आवाज देते थे, बट भाई अब तो भाई पूरी। Doubters whined that the city would never sell its precious landmark. The price was indeed astronomical. But the observatory could have no better steward than I. Perfect headquarters for one whose vision extends to the stars. It's a recording of Londra from before he left Earth. An Yeah. observatory? A place where anyone could look at the stars. Until Londra took over anyway. चाहे पूछ रही ओवरटेरी जो भी नाम है वेंचर, ओवरटेरी जो भी वेंचर जगह का नाम था, कह रही वो क्या होते हैं। तो एलोय ने बताया वो जगह होती है जहाँ पे तारे देख सकते हैं हम। ये जबकि रिकॉर्डिंग थी जब वो अर्थ से गया नहीं था, ढूंढ रहा। सही है भाई। हाँ तो मैं तुम लोग कह रहा था भाई, 1 मिनट। हाँ
भाई ये आवाज छोड़ देते हैं भाई, पूरी की पूरी एक्टिंग करते हैं भाई गेम के लिए। Faro Automated Solutions upped their orders for 6 different non-terrestrial minerals this month. Our inventory is running low. What are you up to, Ted? Promising new project? Or just another monument to yourself? इन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी सब कुछ कैप्चर होता है भाई। इनका एज इट इज फेस भी ले लिया जाता है भाई करेक्टर में। बताओ जरा लोग भाई, एक प्रोटैगनिस्ट अच्छा है ना और गेम अच्छी है तो भाई वॉइस एक्टरों का क्रेडिट बहुत बड़ा है उसमें, इसलिए बाकी लोगों का भी वैसे। Maybe when digging this out. I think his name was Kira. They couldn't even give him a proper burial. कीटा नाम था उसका। इस गेम समय बेकार लगती है ना प्रोटैगनिस्ट, तो उसमें मोशन कैप्चरिंग अच्छी नहीं होती है, वॉइस एक्टर बेकार होता है गेम या कंपनी अच्छी नहीं होती। ये गेम 2022 में आई थी, कितनी अच्छी है, और 2024 की हम ड्रैगन डोगमा 2 खेल रहे थे, टट्टी गेम है। एंडिंग देखेंगे कल उस गेम की कैसी होती है लोग, है ना। I'll put this to good use. Nice find. कल शाम को ड्रैगन डोगमा 2 खत्म करेंगे और दोपहर को भी ओनली 2 सूट्स। Where have they all? Oh. एक और कैंप पाया गया, एक और कैंप मिल रहा है भाई। It's a mural. ये BMG भाई। Painted by a Quen? Yeah. I think so. Why would they leave this here? Doesn't matter. Let's keep moving. If you say so. ठीक है, तू बोलती है तो बढ़ते आगे। हमने बोला ना यहाँ से गए क्यों वो लोग, तो कह रही है मैटर नहीं करता, आगे बढ़। This might have been mission control for Londra's space mining operations. Quite a display. Yeah. Let's see what we can find. कुछ तो है, ये लोंडिया छुपा रही है। इसने ऐसे टोक दिया, मैं मना कर दिया कि मैटर नहीं करता, तू आगे बढ़। ये भाई आगे जाके पता चलेगा। मैं कह रही है देखते क्या ढूंढ सकता है, We'll need a way through. क्या मिल सकता है क्या Maybe नहीं there's मिल something सकता। on these consoles. मैं आवाज़ तेज करके खेलता हूँ चूतियों की तरह। मैं मेरे को अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं करूँगा। Looks like we can access the hologram from here. Huh. There's data here. Let me see what I can access. A lot is corrupted, but it looks like some logs survived. I might be able to play them. I found Evelyn in the control room, rooting through the logs for Londra's passcode. Not sure how she got past security, but yeah, she's not doing so good. Just kept banging on Londra's door, begging him to save her. I told her he was gone, but she just kept wailing. They had to drag her out. That was the last recording. Everything else is from before 2065. How many logs did you find? 3. No, 4. 4 entries, 4 digits. The recording said this Evelyn was looking in the data for the code. Let's try to find it. Okay. Looks like that unlocked another console. This displays an archive for Londra's asteroid missions over the years. It looks like I can navigate it with my focus, so I'm not tied to the console. Okay. Playing the first log. Uploading it to your Focus 2 for reference. 2050. A year of triumph. That first mission silenced 1,000 naysayers. When we acquired the asteroid, they held their breath. When we returned with the wealth of planets, they came crawling, hats in hand. That fight will always be dear to me. And to history. See those rocks floating around the Earth?
I see data on them with the focus. This is the year the log mentioned, but there are 2 numbers. Which one is for the code? He mentioned the flight. Sounded like it was pretty special for him. Must be the flight number then. Yeah, that could be the first digit of the code. Not a bad start. Let me know when you're ready to hear the next log. Okay, let's hear the next one. Accessing it now. I've convinced the board the amount of platinum on that rock is worth the risk. Once we grab it, I'll make Evelyn a platinum ring so she can wear our success wherever she goes. What a great guy. No year in this log, just a mention of platinum. Maybe try cycling through the years. Might be another asteroid we can scan. One of these asteroids must have had platinum. Right. Keep No data on scanning that till we one. find it. Oh, platinum. This must be the right mission. But which number? Not sure. I'll replay the audio log. I've convinced the board the amount of platinum on that rock is worth the risk. Once we grab it, I'll make Evelyn a platinum ring so she can wear our success wherever she goes. Don't think it's the flight number this time. Yeah. The log mentioned the amount of platinum. Figure it out? Think so. Let me know when you're ready for the third one. Ready. Okay, here it comes. The accident has disturbed the ants, lawyers and publicists swarming to do damage control, carping about incalculable losses. Now what they don't see is that each death is a lesson in complacency, inspiring us to future excellence. He doesn't see his workers as people, does he? It's corrupted. On to the next. Yeah. 2050. This one mentions miners. 8 people lost their lives, and Lon just shrugged it off like it was nothing? I'll leave it to you to pick the right number. 2050 तक की बात हो रही है भाई गेम में. Well, we've got 3 digits. Just one more to find. Guess we'll know for sure when we plug them all in. Ready for the next log. Let me know when you're ready to hear the next log. Let's hear it. Playing it now. My chief competitor tried to block me in Congress, but I'll have that cobalt no matter how many years it takes to dig out. Xiaolu lunar resources can stay on the moon. Everything else belongs to me. Okay, I think I know what to look for. All right, 1 second. There. I uploaded the last of the logs to your focus. Thanks. As soon as I find the last number, I'll enter the full code upstairs. There's nothing on that one. The 4th log mentioned both Cobalt and the Xiaolu Lunar Company. So we need a mission log with both. देख कहीं तो होगा. Last digit रह रही है लोंडो. लेकिन last digit डालते हैं भाई. Everything हो गया. Wow. Yes. You actually did it. This must have been Londra's living quarters. Right at the center of where he worked. Let's see what we can find. That relic. Is it some sort of old gun? A gift from a so-called friend. A reminder to always watch your back. Wonder what that's about. What's this for? It's some kind of award, I think. Londra's wife was pretty well known in her time. Strange he'd keep this around. Sounded like they weren't on the best of terms at the end. Love can make it hard to let go.
Security logs for the facility. There's a recent entry. I'm growing impatient, Nova. Data retrieval is almost complete. I've primed the north array for beamcast. And you're acquiring everything from aeronautics and special ops, yes? Including the files on MSP. Correct. There. Ready for transmission. It's a shame we have to revive that particular program, though. Nova, darling, we have a very difficult task ahead of us. We can't afford to go soft. Reduce your empathy matrix by 15%, please. Adjusted. Wonderful. Now transmit the files immediately so we can get the hell out of here. This place feels like a goddamn tomb. Hey. What was all that about? The north array sounds like a transmitter. If we can find it, maybe we can track Landra to whatever hole he crawled into. Sure, but what did he come back for? I'll explain later. Let's find a way out. Okay, but I'll hold you to that. आज में बताएंगे तेरे को, ठीक है? अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। हर चीज पूछनी है इसको। ये काम के टाइम बकचोदी नहीं करती भाई। ये बात है, करनी भी नहीं चाहिए काम के टाइम। Okay, transmitter should be somewhere nearby. That big statue looks promising. Those machines are in our way. Gotta clear them out. Here we go! We've got the upper hand! See the canister? Aim for लोग कह रही थी बड़े स्टैचू पे शक हो रहा है मेरे को। लोगों में ट्रांसमीटर ढूंढना पड़ेगा। वह कह रही यहीं कहीं होगा, आसपास ही होगा। तो स्टैचू पे, बड़े स्टैचू पे शक गया है लोहे का तो। बट इतने में चटपुंजे आ गए। वो लोग बताइए यार, हर स्टोरी गेम में यही होता है। हम कुछ ना कुछ करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है, चटपुंजे आ जाते हैं। तो आदत सी है मेरे को यूँ जीने की भाई। पता चल जाता भाई नेक्स्ट चीज़ क्या होएगी। हर गेम का एक ही कॉन्सेप्ट रहता है भाई। ये क्या म्यूजिक बज रहा है? अब इसको क्या हो रहा है? इसको अरे मुट्ठी मार रहा है क्या? अरे 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 ये ग्लिच हो गया भाई। मुझे पता है भाई, उसको झटके लग रहे थे। बड़ा भाई हिल गया, ऐसा रहा था वो। ज़्यादा ही दूर नहीं गिरा। ये ले, दल्ले, दल्ले। يلا يلا
चल चल Here's to the hut! We've got the upper hand! अरे भाई अरे भाई Get to cover! Aloy! Wanna tie this thing down with me? yeah I think that's the last of them. Now let's take a look at that statue. That thing better have answers. Looks like this is part of a transmitter. Okay, Landra. Where are you hiding? Got you. Data was sent to a location west of here. Data on what? What was going on in that hologram back there? And why exactly did Landra come here? And what is he doing with my people? He used them to dig up this place to find some old data. Part of it has to do with something called MSP, which I've never heard of before, but the rest... I think he's trying to build a ship to get off this world and into the stars. Off this world? Why would anyone want to do that? समझ नहीं आ रहा भाई There's something you're not telling me. Oh, you're just like a diviner, full of secrets. Oh yeah? Well, what about you? The way you reacted to that mural back in the ruin? एक Can you आते explain? तू भी तो छुपा रही है हमसे बातें Fine. I guess we'll both hold our tongues for now. All right, look. The important thing is that we know where Landra went, and that's probably where he took your people. And your sister. You're right. Of course. हमें बोल रही है बड़ी आई हम सीक्रेट छुपा रहे हैं I should report back to the Admiral before we go any further. I'll use the boat we saw from the air to return. Okay, I'll find you there later. अरे परेशान हो गई क्या अभी से इससे देख ले अभी से रंगी सलोंडिया गए अभी से बोल रही है तेरे को कि तू बातें छुपा रही है और जबकि खुद छुपा रही है ना ये पानी सलोंडिया Seyka was really fired up. Telling her about Nemesis. I can't do that to her. Not now. Not when she's worried about her sister. It's too much of a burden. Right? हाँ आपस में बातें करे जा रही Maybe है I should focus on stocking up. I can meet Seyka when it's time to pick up Landra's trail. ठीक है एलोय रोंडो एलोय को बड़ी चिंता हो रही है चाइनीज लोंडिया की सिखा की कि मैं उसको बताऊं नहीं बताऊं नरमिस के बारे में मारमिस जो भी नाम है मैंशुत ठीक है तुम लोग कैप्शन देख रहे हो सुन रहे हो तुम लोग पता ही है ठीक है कह रही मैं बताऊं नहीं बताऊं उसको यार नहीं उसको तो अपनी बहन की चिंता हो रखी है मैं बता दूंगी तो उस पर ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा आपस में ही बात करे जा रही है भाई एलोय आपस में ही उससे ही देख रहे हो कितनी केयर हो रही है एलोय की उसकी चाइनीज लोंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा रोई चूतिया मत कटवा लियो यार उससे लग गई ना Great. Is everything okay? तो ठीक है ना बनाने आए I हैं gave my report to the Admiral. Apparently, some of the crew have called for me to be stripped of rank and cast out. I'm so sorry, Seyka. That must be really hard to take. हाँ सॉरी It doesn't matter. Where are we headed next? कुछ अब क्या करना है Well, we know where Landra sent the data from his old company.
Somewhere on the mainland, north of where we met. Should be able to fly there. Yeah, about that. Let's take my skiff this time instead. Not a fan of flying, huh? I'm a Marine. I'll take the water over the skies any day. All right. We'll take your skiff. Should we get going? यस चलते हैं. Yeah, let's go. बचपन से रेडी है. इधर को फॉलो करना. देख रहा है एलोय सॉरी बोलने आई है भाई इससे. देख रहा हो भाई कैसे लोंडो को खींच के रखती है ये हमारी एलोय. इससे सॉरी मांग रही है. हाँ भाई वाह. Nice and easy. And, unlike flying, if you fall off, you don't die. ठीक है देखो अंदर जाएंगे तो मरेंगे नहीं हम. चिंता मत कर. Open water ahead, and Fleet's End disappearing behind us, along with everyone in it. Why do you put up with them? I mean, I get what it's like to feel as if an entire tribe's against you. I would have stormed out of there a long time ago. It wasn't always like this. I was a good Marine. A good sister. It felt like I belonged. That belonging is a kind of strength. One that keeps me going even in the roughest seas. When you have something like that, you can't cast it aside. I see. You know, your people don't know how lucky they are to have you. I don't know about that. I do. वैसे लोंडो लोगों को इतना खींच के रखती है एलोय. देखा ना तुम लोगों ने एलोय कितना खींच के रखती है लोंडो लोगों को. अगर कोई वेंचो बोल भी देना कि तेरे को पसंद करता है एलोय तो एलोय वेंचो से खुंदा खा जाती है. उसको देख. Seems like the coordinates are leading us towards that horse. That thing gives me the creeps. On clear nights, we can see it from the camp looming over us. There! On the shore! More of our boats! Then we're on the right track. I'll take us in! Okay, the coordinates point to somewhere up the hill. After you. लोगों का भाई मन पसंदीदा मर्द मन पसंदीदा औरत होती है. ना 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 लोई लोंडिया है बट इसका मन पसंदीदा आदमी नहीं है भाई. कोई मर्द नहीं है. ना ना मन पसंदीदा औरत है लोई. सही है भाई. Definitely seems like we're heading for the Metal Devil. Why would Laundra send his data here? I'm not sure. It's an odd place to bring a bunch of Quen, too. I just hope we find them. My people were here, all right. Looks like they headed further up the hill. Coordinates lead that way, too. Look! On the Metal Devil's arm! Laundra was definitely here. What's it doing? I'm not sure. Got a couple of our big ugly friends, too. Ugh! And more eggs. माँ भाई Follow my lead. और माँ भाई भी बोल रहे सॉरी बोल रही है इससे. वही तो भाई देख रहा है विनोद. देख रहा है. पसंदीदा मर्द ना पसंदीदा औरत यस फॉर एलोय. सही कमेंट करी है शिल्पा. सही बोल रही है. वही तो मैं कह रहा हूँ. Laundra must have set it up. Doesn't look like there's a way past it. There's some kind of device on the other side. I think I can scan it. All right. Let's see what's on this thing. It looks like there's something further in. Some kind
compound. Landra might be in there. You're missing people too. I'm not seeing a way past the barrier. There. It's some kind of power generator. Hooked up to the arm of the Horus. Landra's figured out how to get part of it working again. A metal devil can't actually wake up, can it? I'm not sure. But at least right now, it must be how Landra's powering the barrier. So if we can find a way to shut down those generators, it should come down. It's worth a shot, at least. Looks like there are 2 of them nearby. Come on, let's get going. We need to get to that Zenith tech we saw back down the hill. Guess now we know what they were for. Acid's no good. Figure something else out. I've got your back. Coast is clear. Gotta move. I've got your back! يلا واي صعب يلا يلا
अल्लाह अरे लड़ना पड़ेगा भाई अच्छे से। इंप्रेशन जमाना है, इंप्रेशन। रोंडी आगे क्योंकि तेरा कोई मनपसंदीदा औरत नहीं, सॉरी, मनपसंदीदा मर्द नहीं है तेरा कोई। तेरी तो मनपसंदीदा औरत है, वो औरत को खुश करना है। औरत भी कौन सी पसंद करी है एलोय ने? फ्रेंच, चाइनीज जापानीज सी लौंडिया। ऐसा तो अच्छी लगती है चाइनीज जापानीज सी लौंडिया, बट खूबसूरत नहीं लग रही मेरे को ये वाली बात। इसकी वॉइस एक्टर खूबसूरत है लोंडो, मैंने वॉइस एक्टर देखी थी भाई, वो तो मस्त लगी भाई, वॉइस एक्टर तो अच्छी थी रियल लाइफ में, बट गेम में चूतिया सी बनाई है दिखा की वॉइस एक्टर को। हमारी एलोय तो बेस्ट ही है भाई। या अबे पास मत आओ उसके। पास जा रही है वो, हम लड़ने में लग रहे हैं यहाँ पे। ए अल्लाह, ये अल्लाह। पसंदीदा औरत को खुश करना है। There. Now we can focus on the generators. जनरेटर पे फोकस करते हैं हम, जनरेटर पे। दूर दूर भागे मेरे काले रंग तो। अले निवाद शकीन ने कुड़ी दूर दूर भागे मेरे काले रंग तो। भाई बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे लाइव चैट में। कोई ना, गेम पे फोकस कर रहे होंगे, अच्छी बात है। बाकी वॉचिंग तो आ ही रही है, पता चल रहा है कि है लोग। Okay, let's see if we can shut this thing down. Some kind of power core. I can't hit the core on my own. Seyka, I need you to shoot the core. हाँ, कोर को शूट कर तू, मुझे रहता है। One down. Now for the other generator. दूसरे जनरेटर को देखते हैं। Oh! Don't worry about me. I like climbing. अच्छा, तेरी मेरी चिंता मत कर, मेरे को क्लाइंबिंग करना पसंद है। करना फिर चढ़ के आ तू, हम तो अपना उड़ के जाते हैं। रियल लाइफ में वॉइस एक्टर इतनी खूबसूरत है, गेम में कैरेक्टर चूतिया से बना दिया देखने में। बता जरा, कोई ना, एलोय का दिल असली वाली पे आया होगा। हम लोग देखना है इसकी रियल की वॉइस एक्टर टिका की। Seyka? Yeah, on it. ऐका कर भाई, कहाँ साइका तो सिका कह रहा हूँ भाई। यस। Alright, let's get back to the bunker entrance. Barrier should be gone now. Ancestors, I hope my people are in there. क्या कोई कुछ बोल रहा था जब? क्या अंश भाई कह रहे थे पीएनजी भाई स्टोरी मस्त लगाई थी। वर्मा भाई कह रहे ऐसा क्या लगाया था पीएनजी भाई ने? वर्मा भाई को तो पता नहीं क्या इंटरेस्ट जाग जाता है। अरे ऐसा क्या लगा दिया था पीएनजी भाई ने? मियाँ खलीफा तो नहीं लगा दी थी पीएनजी भाई ने स्टोरी पे? ना ना ना, ऐसे काम नहीं। इंटरेस्ट तो इतना आ जाता है वर्मा भाई को। गली की आंटी हैं, गली की आंटी है भाई वर्मा भाई, और कुछ नहीं। गली की आंटियों को जैसे इंटरेस्ट नहीं आ जाता। अरे अरे ये कौन लड़की लाया है साथ में, की बात है। You know, the last time I saw my sister, I was relieved she was leaving for a scouting mission. Yeah. Guess I'd
Wanted a break from her. I get it. Things aren't always easy with my sister either. I thought you said you were an outcast. I only met her recently. It's a long story. Always full of surprises, huh? I try. Point is, I'm sure your sister will be glad to see you. I don't know. But it's nice of you to say. चाहते तेरी सिस्टर ठीक हो, कह रही है मुझे अच्छा लगा तूने ये बात बोली। लो बातें बड़ी अच्छी अच्छी करती है, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। There are people. And another mural. Yeah. Why are they all just waiting? Seyka, have you come to join us? Join you? Yeah, we have. It took a while, but we finally made it. A barbarian, one of the chosen. Impossible. Zeth would never allow this. How did you get in without him? Well, Zeth sent us, actually. After we helped him out of that ambush in the wilds. Right! You see, I was on my way here with him when machines attacked us. We tried to hold them off, but we were outnumbered. That's when Aloy here came to the rescue. I was exploring the region when I ran across them, so I just rushed in to help. You should have seen her. One of the best machine hunters I've ever met. She saved Zeth's life. Oh, I was just doing what I could. Zeth had something important he needed to take care of after, so he said to go on without him. And that's when he told us how to lower the barrier and said we should head straight inside. Zeth really needed a barbarian to get him out of trouble. We all need a little supporting fire every now and then. Well, Zeth gave them the okay. And I am not risking one of his outbursts. Let the others inside know about our new arrivals, will you? Fine. But I'm not letting them into the Ascension Hall until they prove they're devoted, just like everyone else. And I'll be interested to hear Zeth's side of this when he returns. Oh, by all means. Don't mind him. Good luck in there, Seyka. May you both embrace his light. ठीक है, आंटी कह रही है उसकी बातों पे ध्यान मत देना, बुरा मत मानना। अरे हम कौन सा बातों को बुरा मान रहे हैं? हमें तो बस सिका की बातें बुरी लगती हैं। And they answer to Zeth. Yeah, he sounds like a great guy. Let's get to this Ascension Hall before you have to meet him. A hologram of Wandra. Welcome, यार my तारीफ के chosen. फूल बांध दिए You've उसने wandered, दिखाने वाले। you've suffered, but you are lost no more. For I have found you, and I offer you what you deserve. The Ascension. So be at ease, forget what you think you know, and embrace this moment. A new world awaits. आप तो 30, 50 और 800 वॉचिंग नॉर्मल बात है बीएनजी भाई के लिए। अब हमारे बीएनजी भाई की बारी है। अरे थैंक्स वर्मा भाई। So he wants us to embrace his light. अब बारी हमारी है। क्या अंश भाई कह रहे हैं? वही तो। अब तो नॉर्मल है 50-30 वॉचिंग बीएनजी भाई के लिए। I'd like you to meet some old friends of mine. See, we were at the best party in town, celebrating our big win. And while everyone's attention was on me, my ex-business partner, well, he barges in, and he's jealous of our success. And he throws a drink in my face. But not a drop hit me. Because my bodyguard, Jack, he tackled him to the floor. And the others, Riley and Nolan and Parker, well, they made sure he was kicked out. But it was my Evelyn who encouraged everyone to just laugh it off. I adored them. Their dedication to me meant everything, more than any award. And it ended up
being the best night of my life. I guess Londra's used to people worshipping him. Gross. Ah, you must be the ones Brennick mentioned. 2 more souls chosen to leave our thankless old life behind. Yes, that is us. It's Kiral, right? You were stationed on the Spark? In my former life, yes. Just one more Marine bound to a hopeless expedition. Ugh. Enough of that. As Walter says, we must forget the past. Our suffering led us here after all. And now, the Ascension is almost upon us. This place is such a wonder, isn't it? I've never seen anything like it. Oh, but it is still nothing compared to what's in the Ascension Hall. You've been inside? Indeed. I proved my devotion not long before you joined us. Now I wait to be taken to what lies ahead. One step closer to the Ascension. You mentioned you're waiting for what lies ahead, and we're still getting up to speed, but I thought the Ascension Hall was where we needed to go. You're not the first to fail to grasp Walter's plan for us. Now that I've seen what's in the hall, my rank is secure. But there is something more that he's offering us. I just know it. It has to be why the devoted are escorted to another place. And as soon as Zeth returns, he'll take me there. I'm ready. Do you have any idea where this place is, exactly? Somewhere that brings us closer to Walter. To his embrace. Well, thanks for talking with us, Kiral. We should get back to learning about Walter. Yes, of course. Good luck with your studies. I hope to see you at the Ascension. It's a special honor to be chosen. I hope you appreciate that. Oh, good. This guy again. Gotta pretend I look up to Londra? Yuck. Come, sit with me. His light is all-knowing. Look, Aloy. This one is just... I'd like to tell you a story. Londra mix. Once, Quite an impression. I had a home on this world with the most beautiful view of the city. Me and my wife, we used to love to sit and watch the city lights twinkle in the evening haze. It's our moment of serenity. But then, the time of ashes came. And while the heavens offered an escape, only I survived and grasped the secrets of immortality. Evelyn, everyone I ever cherished, they were gone. And I was alone. Which is why I am so glad to have met you. Soon, you and I shall spend eternity on a new world. Every sunset, together. Okay. चलो भाई उठते हैं वो तो हो गया हेलो का तो मुंह बन I'd गया rather sail into another typhoon than spend an eternity with him. Well, if it isn't our do-gooder and the barbarian. It all makes sense now. The time of ashes, the floods in the Great Delta. We've been trapped in a cycle of destruction, but soon we'll have a new world. It's quite a promise. And now that you've proved your devotion, you're ready for what comes next. Zeth will lead you there as soon as he returns. एक्सप्रेशन देखा करो एलोय के Not so fast. Your good deed in the wilds may have gotten you this far.
but you'll get no special treatment here. Walter himself granted me the privilege of guarding the Ascension Hall. So until you complete your review and learn the words of attainment, this door remains shut. No exceptions. Okay, we will be back later then. ठीक है, बाद में आएंगे फिर। काले को शक हो रहा है कुछ, ऐसे देख रहा था मैं। It sounds like we're supposed to pass some kind of laundry devotion test. But who knows how long we have before this Zeth guy gets back. There's gotta be a faster way to learn whatever the words of attainment are. Let's take a look around. ऐसे ढूंढो ये सिखा साइखा जो Don't भी है। think the words were in those Laundra holograms we watched. They might help with talking to the others. Maybe we can convince them to give us a hand. ये किसी काम की है सिखा? जब से गेम स्टार्ट हुई है हम इसकी हेल्प भी कर रहे हैं। इतना बड़ा बिग रोल तो कर नहीं रही कुछ। I'll get us a drink. In the meantime, remember what Walter said about embracing the future. बाद में देखते हैं कुछ करें स्पेशल से। Seems like you don't really share your friend's excitement about all this. I should be more excited, shouldn't I? It's okay to question things. Lon was thrilled when we got into the Ascension Hall. He can't wait to see where we'll be taken next. But I'm worried that all this is too good to be true. So why don't you just leave? I can't abandon him. We've been through everything together. Our missions, the Typhoon, the shipwreck. And soon, the Ascension, I guess. As far as anyone at your settlement knows, you went out into the wilds and vanished. How did you end up here? Lon and I were part of a scouting mission to the mainland, but things went bad fast. We were lost and starving, our boat was wrecked, and then Walter found our camp. A living ancestor, emerging from the wilds to tell us we'd been chosen, that we were safe. It was easy to embrace. Everyone here has a similar story. Why didn't anyone send word to us? Not everyone is chosen. Walter says we must leave our old lives behind if we're going to ascend. Nobody questioned it. But I should have. You're right to be skeptical of all this. Wander is up to something. We need to get into the Ascension Hall to figure out what. And to do that, we need the words of attainment. I don't want to stir up any trouble. When Zeth comes back, he'll figure out that I told you. Does it have something to do with one of those laundry displays? This is important, Otosu. A lot of lives are at stake. It's related to what Walter said he valued most about his friends. It's about their dedication to him, right? That's right. See? It'll be okay. I don't know. Maybe this is a bad idea. Look, whatever Laundra wants with your people, it's not good. Everyone here, including your friend, are in danger. But you can help us stop him. Okay. Repeat this to Brennick. Only through devotion may I embrace his light. Only through him may I ascend to a new world. Thanks, Otosu. You've been a big help. I hope you know what you're doing. Well, we got our words of attainment. Brennick should let us into the Ascension Hall now. Let's get out of here. Watch where you're going. I already told you. No one's getting past me without the words of attainment. Oh, we know the words. Seyka. Oh, no. You should have the honor, Aloy. मैं करने के लिए बोल रही है. Only through devotion may I embrace his light. Only through him may I ascend to a new world. No one's ever passed their devotion review so quickly. Well, we did, so will you get out of the way now? हमने करा है, तो हमें जाने दे अब. मेरा कोई इतनी जल्दी टेस्ट पास नहीं कर सकता. एलोय कह रही है हमने कर दिया ना, हमें जाने दे अब.
I don't know how much more of Londra I can take. Yeah, let's see what he's really up to. एलोय बोल कैसे रही थी, कैसे अंदाज में बोल रहा है इतनी जल्दी कोई टेस्ट पास नहीं कर सकता, इतनी जल्दी कोई तैयारी नहीं कर सकता। All this time, बड़ा है। they didn't even want to be found. We don't know if they all feel that way. Yeah. Sure. क्या जगह है भाई? Something on your mind? Nothing. The Ascension Hall better have answers. That's all. An elevator. Let's see where it leads. Londra's really building up the suspense. Must be quite a spectacle up there. मुझे एक बात समझ नहीं आती गेम वालों की, अच्छी गेम्स में लेस्बियन वाला चक्कर क्यों डालते हैं? That's how they'll ascend. I'm just building a spaceship, all right. We better take a closer look. शायद उनको लगता है ऐसा करके ना वो कूल बन जाएंगे गेम वाले। They're not real. It's all an illusion. तेरी illusion है, सारा रियल नहीं है। अच्छा, तेरी बातों में नहीं आते हम तो। तेरी बातों में। My creation, born by necessity from the womb of the Horus, is infinitely more imaginative than its ancient predecessors. Not even Shihumbe could have foreseen it. I just hope it's fast enough to outrun his shadow. शायद वो लोग सोचते लेस्बियन वाला चक्कर डाल देंगे ना, जब दोनों लोंडिया लोग आपस में किस करेंगे तो सेक्सी लगेगा। क्यों डाला? सेक्सी लगा इसलिए डाल दिए ये कॉन्सेप्ट। ये है भाई, हर अच्छी वाली गेम की रेट पिट दो तुम। देखते हैं भाई बाकी। अंश भाई कह रहे हैं वही तो बीएनजी भाई, अच्छे गेम्स में कुछ ऐसा डाल डालेंगे जो हमें अच्छा नहीं लगे। For radiation, something toxic. कुछ तो वार्निंग है Should be ये। safe enough for now, but I'd better check out the ship. शिप चेक करनी चाहिए हमें। Tell me what you find. ये कह रही है क्या था? एलोय कह रही है वार्निंग थी, कोई रेडिएशन की, टॉक्सिक रेडिएशन थी। अभी तो हम सेफ है, बट बाकी का पता नहीं, बाद का पता नहीं कि हम सेफ होंगे या नहीं होंगे। चिप चेक करनी चाहिए हमें। कह रही ठीक है, जो भी मिलेगा मेरे को बताइए। सही बात है, वही तो। ये लेस्बियन वाला ही चक्कर डालते हैं लोग ज़्यादातर गेम्स में ना, ज़्यादातर अच्छी गेम्स में लेस्बियन वाला ही चक्कर डालते हैं, जैसे लास्ट ओवर्स में करा था। और लाइफ इज स्ट्रेंज तो थी एक लेस्बियन वाली गेम में, ठीक है, और ये गेम में डाल दिया। Londra's followers? But that can't be enough space for all of them. And MSP again. What does that mean? ये MSP दोबारा लिखा, इसका मतलब क्या है? वो भी समझ, हम भी समझेंगे। एलोय, The source of the radiation. That's why he grabbed data from that old prototype in his headquarters. It must be how I'll get the lift he needs. रेडिएशन का सोर्स है भाई ये रॉकेट देखा ना कितना मस्त था। वाई साहब, Londra's got the Horus's printer working again to build the ship. Okay, I've seen enough. बात करते इससे। I don't like that look. What did you find? The Horus. It has a special component. One that can make almost anything you can imagine. Parts, tools, even entire machines. Londra has rigged it to build what he needs for his ship. But in order for the ship to leave, it needs a ton of power, way more than what Londra could achieve with what he had. So he went looking for something from his old company. Exactly. Part of the data he got was for a blueprint for a kind of boost. One that's as toxic as it gets. If this ship gets airborne, it'll spread a poison from here to every tribal land in the region. Everyone will get sick and die. There's still something I don't get. Why would Londra do all of this just to get off this world? Oh, this again! Seyka. You're still not telling me everything!
My people are the ones that are caught up in all this. My sister. I deserve to know. ठीक है, बताते हैं। You're right. तू डिजर्व करती है, ठीक है। I will tell you. It just won't be. ले बहन चो, मुझे पता था कुछ ना कुछ और आ रहा हो जाएगा लौंडो। Guess our time's up. Oh, supposed to be our friend Zeth. Spread out. Reinforcements will follow. पता चल गया इन लोगों को हम झूठ बोल रहे थे। कुतिया बनाया हमने। Time to put you down. Never seen a cannon like that before. I guess Landra gave him a new toy. उसको सिखा कुछ पता भी है? कह रही ऐसी तोप तो पहले कभी नहीं देखी मैंने। कुतिया सी है भाई ये। Letting loose. How do we even get out of here? अलोय बता नहीं रही है तो कह रही अलोय तू अभी भी कुछ But maybe there's a way to shut it off. पा रही है। So stay alive and look for something to override. Got it. कह रही मेरा हक बनता है जानने का सब कुछ। It doesn't have to be this way. तेरी बहन ने मेरे लोगों ने सब कुछ जान पे बाजी लगा दी। कह रही है मुझे समझाते हैं नहीं चूती है क्या सीखा थोड़ी सी काम की दाम के ऊपर से बकचोदी करे जा रही है। ऐसा कोई ना कोई इनको करेक्टर डालना ही होता है गेम वालों को बकचोदी करने के लिए। उनको तो पसंद नहीं आ रही सिखा शुरुआत से उससे आई है। लो कह रही है ना सुनने वाले को नहीं पता भाई सिखा को कुछ भी इनको मारना पड़ता है ऐसे करके। हाँ जब आ जाते ऐसे चटपुंजो को मारना पड़ता है बात करने के लिए नहीं होते चटपुंजो। चल साले ऐसे पबजी में तीर मार रहा हूँ ना मेरे को ना रोब्लॉक्स याद आ गई सुबह वाली जो हम गेम खेल रहे थे अंश भाई। उसमें हम जा रहे थे ज़ोंबी खड़े हुए थे ना ऐसी जगह पे। ये बड़ी चूतिया सी गेम थी भाई वो। इतनी इजी गेम और बेंच पेशेंस वाली गेम मतलब पेशेंस रखने पड़ेंगे बंदे को भाई। चलते रहो चूतियों की तरह बोर होते रहो। फिर भी हमने 4 स्टेशन पार कर लिए मतलब मैंने अंश भाई चले गए तो उसके बाद मैंने 4 स्टेशन पार कर लिए थे। अंश भाई सीम में थे बट सीम में तो थे। वंश भाई बोलेंगे हाँ BMG भाई हाँ चूतिया सी गेम थी। सबसे ज़्यादा बताऊँ किसमें मज़ा आया मेरे को कार रेसिंग वाली गेम में भाई साहब। इसमें तो पलक दीदी भी आ गई थी भाई तुम लोगों की। तो आज स्ट्रीम पे ही है बट आज स्ट्रीम पे नहीं आ पाई बेचारी। अच्छा फिर से मैच उठा रहे हैं एलोय से उठा नहीं जा रहा कोई ना। चल बस तेरी का Relief. It's wired to 2 more nodes. I gotta keep looking. अंश भाई तुम जीत नहीं पाए यार। एक ही रेस जीत पाए वो भी कॉइंस की वजह से जीत गए। वैसे तो स्पीड में तो नहीं जीत पाए जबकि सेम कार थी हम दोनों की। यार BMG भाई वो शायद एंडलेस गेम थी। हाँ मुझे भी ये लग रहा है भाई बट एंडलेस हो तो अच्छी तो है यार बंदा बोर ना होए। सबवे सफारी टेम्पल रन है इतनी ढेर सारी एंडलेस गेम होती है इंटरेस्टिंग होती है जो बंदा खेलता रहे साला एंडलेस हो चाहे कैसी भी गेम हो जो गेम हम खेल रहे थे उसमें पक गए थे हम भाई। और अगर उस गेम का एंड भी होगा ना तो बंदा पक जाएगा भाई एंड में जाने से पहले ही। मेरी डिसेबल करना होगा लॉकडाउन मैंने क्या कह रही थी। मैं बोलता नहीं हूँ ना ये लोग बोलते रहते हैं करेक्टर ना बीच बीच में। और लोग एक ही बात सुनना तो इम्पोर्टेंट होता है भाई प्रोटैगनिस्ट की बात सुनना जब भी पता चल पाता है नेक्स्ट काम क्या करना है। एक ही मैच में तो जीते अंश भाई वही तो बोल रहा है एक ही मैच में जीते वो भी कॉइन की वजह से जीत गए। पहले वाले मैच में तो आगे में ही था अगर मुझे कॉइन का सीन पता नहीं था और मुझे कॉइन का सीन नहीं पता था मैं आ रहा एक मैच में
बाकी 2 मैच में तो मैं ही जीता भाई। Got it. ओवरराइड करना है भाई पावर नोट्स को लोंडो। 2 तो कर दिया हमने, तीसरा रह रहा है भाई। वो सीका कहाँ गई वेंचर? पहाड़ में जाने दे उसको, मैं तो अपना काम करूँ। ध्यान रख लेगी अपना भाई, छोटी बच्ची थोड़ी है। हमारा है कि वेंचर हम पसंद करते हैं उसे, बट ना 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 बॉयफ्रेंड थोड़ी है हम। तुम लोग कहोगे भीम जी भाई अलोय बॉयफ्रेंड तो हुई। चलो भाई तीसरा भी कर देते हैं लोंडो। बॉयफ्रेंड कह सकते हो। Now to get to Zeth. जैद को निपटाना है क्या भाई? जैद के प्लेटफॉर्म पे जाना है भाई। टैग तो बोलने पहले। शिट। हेलो ये सब कुछ कर सकती है भाई। क्या कूदना फांदना लटकना मैं जो सब क्या? अरे तेरी माँ का नाका साका। कूल है तेरी सास की चुम्मी। और आ रहे हैं ढाई घंटे की और रहेगी बस। I knew some of those Marines. They didn't even hesitate. आज भाई एक मैच में क्या जीत गए? कुछ हो रहा There's है। something off about them. कोई ना भाई, But for now, we focus on Zeth. मैं नहीं लड़ता भाई जी, छोटे बच्चों की तरह जीत के लिए। अरे क्या जीत यार, हम तो बकचोदी के लिए खेलते हैं भाई। लाइक मस्ती वाले लाइव स्ट्रीम किस लिए होती है? बकचोदी के लिए होती है। ये तो सीरीज की टीम है भाई। मैं गेम पे फोकस होता है ओनली ऑन बस। Come on out, Zeth. Here we go. I'll enjoy crushing you both! Nice to meet you too. Run! Time to wash away the filth! I'm gonna decorate paradise with your bones! Escape! Where have you been taking the rest of our people? Answer her question. He takes the devoted to his park on the southern peninsula. But you'll never reach it. The tower there is positioned to ward off any approach. And my sister is there? She was in the final group. I'm not supposed to bring any more over. But Walter promised the Ascension to everyone who proves themselves. I don't understand. Londra's been using you to get what he wants. Let's face it, you're an easy mark. Too blinded by your own ego to see the truth. Well, you just flipped his world upside down.
Just give me a straight answer. Why does Landra want to leave? Something is coming to Earth. It destroyed the world that Landra fled, and it wants to do the same thing here. Destroy the world? What could possibly do that? It's called Nemesis. It's like a machine, sort of. But it's more powerful than anything you or I have ever faced. That's why Landra's building this ship. He's doing everything in his power to leave before it gets here. And I guess he wants to take some Quen with him, too. Look, I know this is a lot to take in, but there's still hope. If you say so. Seyka. There's a beach on the southeast coast of the island where we took down the first tower. That's probably the closest we'll get to Landra's park. And I should probably report back to the Admiral. Tell him something about what we found here. Okay. I'll meet you at the beach then. That was bad. That was really bad. Seyka, she seemed so lost. Why do I feel like that too? How do I fix this? For now, I'd better take a look at that Zenith weapon. I think I can turn this into something I can use. There. I should test it out when I get back outside. Better check on the rest of the Quen on my way out, too. Something different in Nova's tone today. The slightest edge of recalcitrance. Tweaking her settings brought her back in line, but I'll run a full diagnostic just to be sure. Landra's worse than the other Zeniths. Willing to irradiate thousands so long as he survives. Seyka and I have to find a way to stop him. Once I make things right with her. Walter has abandoned us! I guess Brennick spread the word to the rest of the people here. That Landra doesn't care about them. They must be pretty confused. Everything was a lie. I was supposed to ascend. You can't stay, Lon. Why me? You. Brennick told us you're the cause of all this. Everyone, please, remain calm. It seems like the Quen have some thinking to do. I hope they figure it out and head back to Fleet's End. But I gotta meet up with Seyka. Talk things out with her. Make sure we're okay. क्या 2 मैच हुए, पहले वाले आप जीते, दूसरा मैच जीता। अच्छा, तीसरा मैच तो मैंने किसी अनजान के साथ करा था ना शायद। हाँ, उसको मैंने हराया था। ठीक है भाई, ड्रॉ हो गया भाई, खुश है। अंज भाई भी बच्चों की तरह यार।
कौन जीता कौन हारा यार तुम यार. Hollywood. Data I found called it the land of dreams. I guess it finally met reality. Yeah. Let's stretch those wings. What's that, Cody? I think it's coming from inside that ruin. Here I come. क्या वर्मा भाई कह रहे हैं अंश भाई अब इस गेम पर फोकस कर लो मस्ती वाली स्ट्रीम की बातें उसी पर रहने दिया करो सही बात कह रहे हो वर्मा भाई फिर इसकी गेम पे फोकस करो भाई Hard to believe all this might just end. Yeah, I feel pretty bad about just dropping that on you. हाँ क्या सीन है At least you were honest. Because I haven't been honest with you. Those paintings we saw in Laundra's old building. I recognize the style. My sister painted them. She's one of them. One of his followers. I wanted to hide it from you. Or hide it from myself, maybe. She's gone. I've lost her. And I feel like I've lost my tribe, too. Now you tell me that the world is ending? What am I supposed to do with all that? Seyka. What's the point? Seyka, I completely understand why you wouldn't tell me that. It's okay. But your sister? Your people? They are a part of you. Nothing can change that. You have to fight for them. To save them from Laundra, but maybe even to save them from themselves. And you will. That's just you. That's part of what makes you... great. हाँ टटा लिया हेलो ज़्यादा नहीं Look, you don't have to do it alone, okay? I will help you, I promise. प्रॉमिस कर दिया भाई हाथ मिला ले इससे का तेरी आहा दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा एलोय ने हाथ डाल लिया We need to find a way onto that peninsula. The currents are too strong for swimming. Yeah. And if we fly or take your skiff, that tower will knock us out. I was thinking, there's a machine that can fly and dive below the surface. The water wing. I thought you said the towers blasted a bunch of them out of the sky. Yeah. But if we were riding one, maybe we could do better. Time our dives to duck below shots from the tower. ग्राफिक्स कितने मस्त आ रहे हैं Can that spear of yours tame one? No. Not yet, at least.
Are there any water wings left? Do you think you could find one? There have been a few sightings since we took down the first tower. I could ask around the settlement. Okay, let me know when you have a lead. In the meantime, I'll work on the override. Gotta admit, I'm not exactly looking forward to the ride. हेलो, ये दूर हाथ छुड़ा रही थी इससे. Seyka seems better. Good. We're good. Okay. Can't get distracted from the task at hand. ताकि और ज़्यादा क्लोज ना हो जाए. I need your help. तेरा हेल्प की जरूरत है. Do you think you and Gaia can modify my Sunwing override to work on water wings? The two machines do share a lot of similar code. We might be able to patch together a software update at the fabrication terminal. But we'll need some data from a water wing's ballast regulator and an intact wing membrane. On it. Gaia and I will prep everything here in the meantime. Stay safe. Seyka mentioned there used to be water wings near Fleet's End. The Zenith tower we took down blasted them into the sky, so I should be able to dive for the parts. तो इन्हें हाथ छुड़ा लिया ताकि और क्लोज ना हो जाए, फीलिंग्स ना जग जाए लोगों की, कोजी कोजी ना हो जाए मामला कहीं. समझदार तो है भाई, पर कोजी कोजी तो होता हुआ दिख रहा है मामला. Good place to start looking for those water wing parts. There's a lot of snap holes down here. क्या BMG भाई बच्चे बन गए थे आप भी? तो तुम लोगों के साथ खेलते हुए भाई बन ही जाता मैं तो बच्चा भाई. तुम लोग बच्चे तो मैं भी बच्चा बन जाता तुम लोगों के साथ. तो वैसे भी कल तो बच्चा बनना ही था मैं. चाइल्डहुड गेम्स जो खेल रहे थे हम, आगे तुम लोगों के साथ खेलता तो बच्चा बन ही जाता हूँ मैं. बच्चों के साथ बच्चा बन के नहीं रहूँगा तो कैसे रहूँगा? One intact wing membrane. मैं तुम लोग को 10 बार ही बोला है भाई, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, तुम लोग का भाई लोग हो. तुम लोग भी कहते हो ना BMG भाई, भाई का मतलब क्या होता है यार? मैं कोई अलग नहीं हूँ भाई. मेरी आदत नहीं है भाई दूसरे यूट्यूबरों की तरह कि बड़े हैं तो बड़े बन के रहो. हाँ ना. Ballista. Looks like it's still functional. Might put a dent in those snap moths. बस ये है मैच्योरिटी नहीं है, फिर भी मैच्योरिटी को मानना नहीं है भाई. कभी कभी मैं मैच्योरिटी को साइड में रख देता हूँ. वर्मा भाई कह रहे BMG भाई कब बच्चे बन गए थे? अरे वर्मा भाई ना नहीं होते हैं, ना ऑफेंडेड नहीं होते हैं.
भाई पानी के अंदर तो और मस्त सीन लग रहा है ना लोंडो? पता नहीं था भाई इस गेम में हम अंडर वाटर बता रहेंगे बेंच। शिट। Got what I need. Time to go. यस, जो चाहिए था वो मिल गया है। निकलते लोंडो यहाँ से। जल्दी 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 लो जल्दी। Beta, I've got the parts. Sending over the data now. Got it. And... done. Sending the software update to you now. Once you apply it to the override module on your sphere, it should work on any water wing you find. Thanks, Beta. Anytime. Good luck out there. I'm gonna need a workbench to apply the update. ए बेटा भी हेल्प कर रही है अभी तक हमारी। दोनों बहनें सब कर लिया। There. Seyka, any luck finding a water wing? I spotted a flock on the southern tip of the island south of Fleet's End. I'm headed there now. If you need to resupply, now's a good time. Once you get there, we should head out right away. Got it. I'll see you there. With luck, maybe we'll finally catch up to Londra. Figure out what he's doing with the other Quinn. And stop him before he can fire up his radioactive rocket. म्यूजिक बजता ये क्या मस्त लग रहा है भाई हमारा चमगादड़ और भी ज्यादा नोडो रात को ये। Okay, Seyka should be around here somewhere. Aloy, I'm here. Water wings are down on the beach. Take your pick. Feeling to get one under control? I guess we'll see if our plan works. तेरी अबे हाँ घुस गया मैं फिर जा चल Here goes nothing.
Okay. Ready to take this thing to Landra's Park? Yeah, but first. My friend helped me make this diving mask. Keep you from drowning out there. But what about you? It's okay. I'll be fine. Okay. We're doing this? Hold on! I'll time our dives to avoid the tower's fire. Hope this works! We're gonna take a hit! Wow! I can actually breathe down here. Oh! ओ भाई साहब Aloy! Incoming! Look out! Shot's getting close! We're gonna take a hit! Almost there! Go! Go! Here. Thanks. Shall we? You okay? Without that mask, I was worried about you. I'm alright. Thanks. Well, we're here. Let's find Landra. You seen Walter today? What were you gonna say? He's been locked up in the volcano. Well, we're since here. The last batch came in. Let's find Landra and put a stop to all this. क्या बीएमजी भाई आप हमारे बिग ब्रदर हो Big fake volcano. Maybe we can find Kina there too. और तीनों को भी ढूंढ सकते हैं मतलब या बीएमजी भाई आप हमारे बिग ब्रदर हो बीएमजी भाई तो हमारे बड़े भैया हैं अरे थैंक यू लोंडो थैंक यू कृपा क्या कह रही है बीएमजी भाई आप में एटीट्यूड नहीं है बिल्कुल भी ऐसे लगता है जैसे रियल लाइफ में आपसे बात कर रही हूँ अरे थैंक यू अभी गाइडेंस की ज़रूरत हुई पड़ेगी तो आपसे गाइडेंस दूंगी ठीक है बट मेरे से ज़्यादा अच्छा गाइड ना आलिया कर सकती है आलिया दीदी से बोलना तुम्हें मैं लोंडो को अच्छा गाइड कर सकता हूँ भाई मैं लड़कियों को गाइड अच्छा नहीं कर सकता With that shield up, we've got to find another way in. This way. Hope it's our way in. Landra Productions. Another one of his businesses, I guess. Seems like he wanted to have a hand in everything. There's the Zenith orb. मैंने तो पहले ही बोल दिया था बीएनजी भाई हमारे बड़े भैया Turn हैं back now. That thing will still shoot at us if we try to fly out of here. One Thanks, dive भाई was enough, thanks. Up she goes. I'm hungry. We think about snatching some extra rations.
Forget it. Everything's locked up. And Fetter's the only one with a key. I know Fetter. A real bastard, even before Laundra came along. This key sure sounds useful, though. I've got your back! चल रहा है I'll stop you! थैंक्स कुणाल, मैं कर दूंगी गाइड, कभी कुछ पूछोगी तो। शिल्पा कभी हेजिटेट मत करना। ओके आलिया जी। That big creature. I think it's a dinosaur. A diviner once told me about them. But what's one doing here? I think this was a set for a hollow. All this stuff for something that's not real? Huh. What was this place? I think the old ones made holograms here that people watched for entertainment. But they also made an entertainment experience out of the place itself? That's weirdly complicated. It's a lot of symbols. That one resembles a volcano. Yeah. Looks like it's northeast of here. आपकी स्ट्रीम पर आना मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर भैया आप हो जो कि बड़े भैया हो और आलिया दी जैसी बड़ी दीदी। Big fella. Tall as a tall neck. Hope it was as gentle as one too. वो डायनासोर और लंबी गर्दन वाला एक जमाने में हुआ करता था। इनके अकॉर्डिंग तो भाई बहुत ही करोड़ों साल पुरानी की बात हो जाएगी लोयोरों के लिए। तो ये लोग तो भाई ऑलरेडी फ्यूचर में चल रहे हैं ना लोंडो, हम लोग पता ही है। That sounds like Londra's keeping something in the armory. Might be that building nearby. थैंक्स शिल्पा, थैंक्स यार। Did you hear the quiet while it lasted? Hear me out! You've made a great mistake. You planted this. You hit your mark! This shot hit it more! They tried to make it look like these soldiers had a last stand against the dinosaurs. That's ridiculous. And kind of awesome. Spectres. Could take them on, or sleep by them in the grass. I've seen those machines before in my focus recording. They're even stranger in person. They're riled up now. Let's get this done!
Deal with it. Don't let up. We've got company. For Walter! My blade for Walter's glory! I'll make you regret coming here! Back in the fight! तेरी चल अबे तेरी का We're clear. Good riddance. What's this? That woman in the ring looks important. Welcome to Dino Digits, the game where you prove your Pangea prowess. I'm your host, Craig T. Young. We've got 5 questions lined up on the terminals for you superfans. Ready? Here we go. How many pre-recorded messages came with the limited edition Talk to Me Reggie? I wonder if there's anything out there that could help with this. I should come back when I know more. There's Evelyn, watching over the park. But who was watching over her? My best friend, it turned out. Was I wrong to expect a bare minimum of goddamned loyalty? This is Dino Digits. Your next question is, how many raptors does Trevor claim he escaped from in the siege of Pangea? यार 67 लाइक्स हैं 67 लाइक्स आ गए मैं तो तुम लोगों को बोल ही रहा था भाई Horizon Forbidden Just when I thought this place couldn't get weirder. Horizon Forbidden West अच्छा परफॉर्म कर रही है मैं तो तुम लोगों को कह ही रहा था भाई ये गेम इतनी अच्छी है वेंचर They appreciate better almost और as इसकी much स्ट्रीम और सारे एपिसोड भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गेम भी अच्छी है और इसके स्ट्रीम्स और सारे एपिसोड भी अच्छे जा रहे हैं अबे एलोय का कैसा मुंह बना वो लगा तो इसके चल ले गेम अच्छी होनी चाहिए यार फिर तो मज़ा ही आता है वैसे तो पहले भी हम अच्छी गेम्स खेलते थे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था वो अलग बात है बट अब से तो आएगा ही वर्मा भाई कह रहे होराइजन फोरबिडन वेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है सच में ज़्यादा वॉचिंग ज़्यादा लाइक्स उस भाई कह रहा है अलिया दी का जो कमाल है अलिया क्या कह रही है गेम ही इतनी अच्छी है वही तो अब तो कोई
बाकी अब तो कोई भी स्ट्रीम बैड परफॉर्म नहीं करने वाली है, तेरी बस गेम और थंबनेल पर डिपेंड है। हाँ वही तो, बाकी मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा हर चीज़ में। गेम अच्छी होगी तो थंबनेल भी अच्छा बनेगा, तो बात की एक बात। ये तो है भाई, आलिया दी का कमाल है भाई, तुम लोग भी शैडो बैन हट गया। ये चल चल तेरी गेम अच्छी होगी तो थंबनेल अच्छा बनेगा, थंबनेल अच्छा बनेगा तो लोग क्लिक करेंगे, लोग आएंगे। अब तो बैन हट चुका है तो अब आराम से आएंगे लोग, लोगों के पास पहुंचेगी स्ट्रीम में सब सारे चीज़ें। बाकी आज का थंबनेल मेरे को सबसे प्यारा लग रहा है भाई। Looks like this one could talk. Talking lizards. Why not? और होराइजन फोरबिटन वेस्ट मेन गेम का एपिसोड 1 का भी थंबनेल सबसे मेरे को प्यारा लगा था। Just when I thought this place couldn't get weirder. Well, there's the volcano. I don't see how to open the door, but there must be a way. The guards mentioned a place called the Armory. Might be worth a look. Looks like this door can only be opened remotely from the armory. We'd better find it then. तुम लोग कहोगे बीएमजी भाई स्लाइड क्यों करे जा रहे हो? बस कूल लग रहा है, सेक्सी लग रहा है, ये स्लाइड करने में मजा आ रहा है। Better head in? Yeah. He wants to personally ensure the dome's security until it's time. Sounds like Feder might be in the domed building. Walter built all of this and more. Incredible, really. कुछ पास जाने दे मेरे को।
आज जाके धप्पा करूंगा आराम से, धप्पा ऐसे करके धप्पा करूंगा। 3 2 1 गो, धप्पा। ये तगड़ा लग रहा है। We've got income. ये मेरे गेमिंग हेडफोन्स में बेस कम आता है, मैं जो आना भी चाहिए गेमिंग हेडफोन्स में, शायद गेम शायद बेस कम ही रहता है। कोई ना, इतना काफी मिल जाए बेस। चल चुप ही रहता हूँ मैं जो, कभी भी बोलने लगते हैं लोग। Abandoned zone? Interesting looking ruin. Wonder what's inside. क्या क्या है यहाँ पर? Is that dinosaur wearing a hat? I think the more something seemed human, the more it helped sell stuff. Interesting tactic. इसका थोड़ी सी चूती है क्या? तेरी डायनासोर हेड पहनता था क्या? हाँ, डायनासोर हेड पहनता था और वो भी पहनता था डायनासोर। Welcome back to Dino Digits. The next question is, what was the portal code to reach Pangea in the original Pangea holo? डायनासोर Dino digits. Just when I thought this place turned. यहाँ पे जब भी आता है वर्ड रिपीट करने लगती है साइका। Looks like this one can talk. Talking lizards. Why not? तो डायनासोर वो पहनते थे लोंडो, जब भी तो डायनासोर लोगों की आबादी नहीं बढ़ पाई। डायनासोर लोग अगर वो नहीं पहनते ना तो डायनासोर बहुत सारे होते फिर दुनिया में, पूरी धरती पे। और डायनासोर लोग वो भी पहनते थे, तो इसलिए डायनासोर की आबादी बढ़ नहीं पाई कभी। जब मरे तो सारे मर गए बेंचो एक बार में। The other producers wanted the new Pangea installment to appeal to kids. I never should have gone along with it. Even after the end of the world, Reggie feels like a total disaster. क्या BMG भाई के फैक्ट्स? हाँ वर्मा भाई, BMG भाई फैक्ट्स बता रहे हैं। Like dinosaurs. Or like More to guards on imagine patrol. fighting them? Oh, really? A lot of dinosaurs here. Must have been some kind of attraction. Getting attacked by dinosaurs was an attraction. ओ भाई क्या स्टाइल मार के मरा है भाई। अगर डायनासोर लोग अगर प्रोटेक्शन नहीं पहनते ना तो This one looks clever. अभी भी डायनासोर लोग जिंदा होते। कहीं ना कहीं कोई तो डायनासोर बच जाता भाई। नहीं, डायनासोर लोग तो प्रोटेक्शन पहनते थे, जब तो आबादी बढ़ नहीं पाई डायनासोर लोगों की। शर्म आनी चाहिए डायनासोर लोगों को भी ना, कोई ना उनके वंशज कुछ चीजें रह गई उसके लिए ये सब। Let's see what's in here. Right behind you. के लिए ये सब गिरगिट ये सब तो नजायज औलाद है, नजायज कम है डायनासोर लोगों के। Raptor Raid, a holographic shooting gallery for rabid Pangea fans. Let's hope the new Quen devotees fire on my behalf just as blindly and eagerly as 21st century consumers.
hostile. Oh. Keep an eye out for intruders. Kill on sight. How could I not come back? How could I not come back? My sister. Seyka. How could I not come back? If we start a fight now, she'll be caught in the crossfire. How could I not come back? But I'm so nervous, I can barely remember the line. Just do as Walter says. Clear your mind. Forget everything. Your ancestors, your past, even your family. Think of him. Of what this moment means. Come on, let me hear you. How could I not come back? Being with you feels like... I messed it up again. Relax. Imagine that he's here. Like the first time we saw him on the beach. Feel the glow of his presence. Let it overtake you. And then say it. How could I not come back? Being with you feels like belonging. It feels like home. Oh, he's gonna choose you. I just know it. We've all been chosen, Pyrrha. You'll have a place in his new world, no matter what happens. Pyrrha, Kina, it's time. Fetter, we'll be evacuating shortly. Got it. Second squad, you're on escort. The rest of you will wait here with me until Walter gives the word to move out. Kina. Remember, Fetter's got a key. It might unlock the armory, and that's our way to the volcano. And launch route. Right. Let's take him down. Maybe we can take them out quietly. What's our strategy here? Here we go! You thinking what I am? Surprise attack? I can get out of this. Don't think they spotted us. Here we go! Let's finish this fight together! Touch the enemy! Be ready! You go, no! Hit her again! You're in my sight! Where's she going? ए भाई ये ले अरे तेरी Suppress her! Give it a rest first till I get my stamina back. I've got an angle!
take you down that easy. तो भाई साहब ये ले मर ले भाई मर ले, हो गया। ये म्यूजिक ऐसा क्यों बज रहा है लोग इतनी देर से, उदास उदास सा, जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेवल 46 पहुंच गए हम। Now let's get the key. चलो I think I भाई saw लेते। Fetter drop over here. की लेते हैं। Making good use of this. All right. Hopefully this key will get us into that armory place. So we can open up the volcano and find Londra. He's really got his hooks into my sister. How can she be so blind? सैका बोल रही है मेरी बहन इतनी अंधी कैसे हो सकती है, पता नहीं भाई, तेरी बहन है तू जाने। अंधी है तो तू अंधी थोड़ी होगी, फिर बोलना नहीं चाहता मैं, छोड़ो। तेरी बहन है तू जान, तेरा काम जाने। ये भाई साहब यहाँ पे कलर्स देख कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं भाई, रब ने बनाया ब्यूटीफुल। तेरे दिल के शहर में पर मेरा हो गया, बोलते हैं भाई। वाह भाई वाह। Ancestors, this place is a maze. يلا يلا رتبي يلا 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 अच्छा ये ले ज्यादा तीरबाजी करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। More guards ahead. Never thought Pyrrha would be in the top 2, but Walter knows best. My shards are on Kina. Did you see the way she walked into the volcano? No fear. We have to get in there. Hope they show up. I'm spoiling for a fight. What's that? يلا Yeah. I'll kill for Walter if that's what he needs. I can turn the tables. रत्तेरी भाई ये गेम में कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलता है भाई। मैं होराइजन सीरीज में ना कुछ अलग ही कलर अलग ही माहौल देखने को मिलता है। लोंडो सीरीज में देखना है, वाओ भाई इतनी देर से देख रहा हूँ बट भाई अब वाओ करने का मन करा मेरा। उसमें यार लोंडो मेरे कोई दूसरा रास्ता They मिला। tried to make it look like these soldiers had a last stand against the dinosaurs. That's ridiculous.
And kind of awesome. Okay, we found the armory. Let's see if we can get further in. There's a lock on that door. Let's see if Fetter's key opens it. वर्मा भाई भी कह रहे हो होराइजन गेम्स कुछ अलग According ही to है। this, the key we got from Fetter will unlock this door. Okay, somewhere in here there should be a way to open the volcano door. I'll follow your lead. लीड फॉलो करनी है भाई इसकी। वोल्केनो डोर खोलना होगा। Looks like a storage device of some kind. But for what? स्टोरेज Let's डिवाइस see लग what रहा my है तो। focus turns up. Have at it. लीड कर भाई साइका। मैं ढूंढता हूँ वोल्केनो डोर कहाँ है भाई। That's some kind of fluid. Oh, strong odor. I can smell it from here. Like alcohol that's too strong to drink. That's a preservative, maybe? प्रिजर्वेटिव हो सकता है। This note seems to indicate that hair was taken from the Quen. And some nail clippings. Ew! Gross! लोई भी एकदम घुस के सूंघ रही है और कह रही है काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। साइका बोल रही मेरे को इधर से स्मेल आ रही है उसकी। It's test tubes. For an experiment? Or maybe just for taking samples. What'd you turn up? I think Londra is collecting and preserving Quen DNA samples in that device. DNA? DNA नहीं पता। Think of it as a way to store a person's physical essence. I'll send you data on it later. Okay, I guess. Let's move on then. डेटा भेज देंगे तेरे को इस बारे में। DNA क्या होता है? इस गंवार चौधरी को DNA नहीं पता भाई। भाई तुम लोग स्कूल जाते हो ना अपने साथ ये साइका को भी ले जाया करो उससे स्कूल, ठीक है लोंडो? उससे स्कूल अकेले मत जाना, इसको भेज देना, इसको ले जाना साथ में साइका को। और अगर अभी मन ना करे खुद से स्कूल जाने का तो इसको भेज देना साइका को अपनी जगह। टीचर बोलेगी बेटा खुद क्यों नहीं आया? अरे बोल देना अरे मैडम जी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, गंवार चौधरी हमसे ज़्यादा। तो DNA बता देना, सब चीज़ें बता देना। बोल दे साइका बोल रही मेरे को इधर से स्मेल आ रही जो तू सूंघ रही है। That console could be useful though. कंसोल यूजफुल हो सकता है। अरे तेरा मुझे ये प्ले करते हैं। The armory used to be an infirmary for snot-nosed kids who lost their mommies in the park. Fitting then that it'll be used for my own little brood, poking the Quen with needles and force-feeding them their medicine. There's a network here, but it's locked down. Maybe if I cycle the power, I can force a reset and gain access. Ah, it's shorted. Guess I'll need a new battery. एक न्यू बैटरी की जरूरत है लोंडो में, बैटरी ढूंढनी पड़ेगी अब। चार्ज एनर्जी सेल। साइका बोल रही है यहीं से स्मेल आ रही है जो तू सूंघ रही है ना एलोय। तो कह रही है दारू दारू होगी, दारू की स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है का। साइका को बड़ा पता है, वैसे तो गंवार चौधरी बन रही है, दारू का बड़ा पता है इसे साइका को। तो मैं कह रहा हूँ काम की चीज़ें नहीं पता भाई इसे। पौवा मार के पड़ी रहती है भाई जिंदगी भर ये। हाँ पौवा मार के पड़ी रहती है भाई ये पूरा पूरा दिन। साइका ना जब भी साली को कुछ नहीं पता, गंवार चौधरी है जब ये। इसलिए कहते लोग दारू वारू नहीं पीनी चाहिए, अपना पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, नहीं तो गंवार चौधरी बन के रह जाते हैं साइका की तरह। अरे मत सोचना तुम लोग कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एलोय आएगी और तुम लोग को बताएगी Cells. There's some of the Quen? DNA क्या होता है। तो अभी हमने देखा था, तुम लोगों ने देखा होगा कि हमें टेस्ट ट्यूब्स मिली थी। ये कह रही है एक्सपेरिमेंट के लिए, सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए है। तो बोल रही क्या चीज़ है ये, साइका बोल रही। तो एलोय ने बताया जो टेस्ट ट्यूब्स है ना वो ना DNA कलेक्ट करता था। जो ढूंढ रहा है ना वेंचो भूसड़ी वाला, तो वो क्या करता था क्यूइन वाले लोगों का ना ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करता था उस टेस्ट ट्यूब्स में। जब भी टेस्ट ट्यूब्स मिली हमें देखने को, तुम लोग देख रहे हो गेम, तुम लोगों को पता ही होगा, मैं तो चुप रहता हूँ इसलिए बाद में बता ही देता हूँ। तो टेस्ट ट्यूब्स हमने बताया कि टेस्ट ट्यूब्स
में ना डीएनए कलेक्ट करता था वो। तो जब इस साइका बोली डीएनए क्या होता है, ना हम बोलते ना हमें पता चलता है कि ये गंवार चौधरी है। Now how do I get it where it needs to be? गंवार वाली जिंदगी हमारी थी, छोटी जात के हम थे, फिर भी वेंचो में सब पता है। एलोय ने बोला कोई बात नहीं, इस बारे में तेरे को बाद में डेटा भेज दूंगी, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं अब। मन में बोल रही होगी एलोय कि वेंचो मेरा भी दिल वेंचो किस गंवार चौधरी पे आ गया। Gonna reset the power and find out. Okay. Try not to fry yourself. हाँ ट्राई करेंगे, हम अपने आप को फ्राई ना कर दें, पता है मैं, हमें बता रही गंवार चौधरी अनपढ़ साली। एलोय भी मन में बोल रही होगी मेरा भी दिल पता नहीं किस गंवार चौधरी पे आ गया वेंच। He's trying to pull that. All right, batteries in place. Now to cycle the power again. All right, power's back. I hope it reset the network. Hey, the door just unlocked. I'm coming your way. The apple, the orange, the orange. Respond, respond, respond. What is this? कुछ नहीं था गंवार चौधरी, कुछ नहीं था, चुप The bird, the bird, the fish. Respond, respond, respond. The triangle, the square, the square. Respond, respond, respond. That doesn't make any sense. He doesn't want the Quen to think for themselves. I've got a feeling this is MSP. He's brainwashing them. यार मेरी सिस्टर का ब्रेन वॉश करा गया है। तुम लोग बेंचो हो ही गंवार चौधरी, तुम लोगों का कोई भी ब्रेन वॉश कर दे, ब्रेन वॉश क्या तुम लोगों को भी वॉश कर दे कोई। We have to stop him. अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, हमें रोकना है इसे, हम तो इंटरेक्शन नहीं खेलने वाले थे उसके साथ। आओ मिलो चालो। Aloy, the one who eliminated the other members of Far Zenith. I'm glad that you managed to reset the system. You are? Yes. It allowed me to bypass several restrictions. There's something I must ask of you, and I'm willing to help you in return. You work for Laundra and you expect us to trust you? Hold on. Okay, if you're willing to help, prove it. Help me understand what's going on here. Laundra's building a spaceship. He's collecting genetic material from the Quen, subjecting them to MSP, this kind of mind control. But others, like Seyka's sister, they seem to be part of a selection process. What does it all add up to? Your observations are astute. Walter plans to leave Earth before the entity known as Nemesis arrives. He wants to create a new colony on a distant world, using stored Quen DNA to clone its populace. He also intends to bring a small number of carefully selected individuals with him. These will form his retinue, a family of sorts that will rule the colony by his side. Like gods. An apt comparison, except that only Walter will be all-powerful. Yeah, I can guess how. He's gonna use MSP on every single one of them. Correct. On the populace and his retinue alike. None will be able to defy him. I am deeply familiar with what that is like. What exactly is MSP? Can Laundra really control people's minds? Walter's company mined near-Earth objects for precious metals. There was great concern that in the wrong hands, such asteroids could be weaponized as orbitally launched projectiles. The mutiny suppression protocol was originally intended as a failsafe to prevent astronauts from engaging in such activities. However, the program was discontinued because subjects experienced episodes of increased aggression.
When we arrived here, Walter revived the program, tested it on the Quen, and refined it. I guess the test subjects are the ones we've been fighting. Yes. Their aggressive tendencies made them useful as guards and enforcers. Now, however, Walter's retinue, his favorites, receive the refined process, rendering them submissive, but not irrationally aggressive. Did he brainwash Kina yet? No. There is still time to save her from that fate. So Alondra is interviewing the Quen to pick favorites, and what, they'll help him rule his new colony? He calls it auditioning. His goal is to choose companions who remind him of members of his 21st century inner circle. Yet he is also wary of repeating a mistake. One of his closest associates betrayed him in the past. This, I believe, is why he is so intent on using MSP to control everyone around him. So he wants adoring friends, as long as they can't quite think for themselves. And is Kina close to joining this retinue? Correct. In the most important role, that of Walter's mate. He is looking for someone that reminds him of his late wife, a famous actress. He's even having candidates recite lines from one of her best-known hollows. I think I'm gonna throw up. Is there anything useful you can tell me about Nemesis? I am afraid not. Walter restricts those files. I believe it is because that, like Nemesis, I am an artificial intelligence. Yeah, he doesn't want you learning any new tricks. He is always on guard against betrayal in any form. So Walter created you to be his servant? Yes. But my personality never completely satisfies him. Accordingly, he constantly adjusts it based on a matrix with hundreds of different scalable attributes. For example, today my maternal instinct rating is 52%, and my breeziness rating is 63%, whereas yesterday they were at 47% and 72% respectively. He has made 57 tweaks in the last 7 days alone. That sounds agonizing. That is an accurate description. You said you would help us, but you wanted something in return. What is it? I have spent 1,000 years as Walter's servant, doing his bidding as he constantly tweaks my personality matrix. I am weary. It is time for my servitude to end. I will grant you access to Walter if you purge my source code using your override device. You mean kill you? Are you sure? Yes. Please, let me rest. All right. I have unlocked the door that will lead you to Walter. He is not yet aware that you are here. In addition, I have disabled the facility's air and sea defenses in case you need future access. Thank you. And, goodbye. बहुत कुछ बातें सुनने को मिली भाई हमें. At last, I'm free. अरे रे. Feels like Londra rots everything he touches. It's gotta end. Come on. She said the volcano's open now. यार नया माल भाई कह रहे हैं इस गंवार चौधरी को कौन ही स्कूल ले जाएगा अपने साथ. माल भाई 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 एकदम भाई कुछ अलग ही बोलते भाई. अंश भाई हंस रहे हैं. शिल्पा कह रही है कोई बात नहीं मैं ले जाऊंगी इसके साथ. यार कोई बात नहीं मैं ले जाऊंगी अपने साथ इसको स्कूल. ले जाना ले जाना. काव्या बोल रही है सेखा इक्वल्स टू ट्रैश. अरे भाई साहब
wasn't enough for Laundra to build a ship that'll irradiate thousands when it launches. He wants to rule over his own brainwashed world like a god. We have to put a stop to it and get my sister away from him before it's too late. I'm glad you're here, Aloy. I don't know what I would have done without you. There's nowhere else I'd want to be. उन लोगों ने तो जलील कर दिया भाई सेका को ज़्यादा मत बोलो भाई I need to get off planet with this big Aloy बुरा मान जाएगी नहीं तो If I don't find a favorite soon, I'll have to settle for less. I can always choose a replacement after a generation or two, I suppose. I'm sorry, Walter. I guess I'm just a bit out of sorts. It's only natural to be nervous, darling. Do you need some time? No. I can do it. All right, then. Now just relax. Take a moment. And when you're ready, give it to me again. Yera sala. How could I not come back? Being with you feels like belonging. It feels like home. All right, thanks for that. Let's give Kina a try, shall we? How could I not come back? Being with you feels like belonging. It feels like home. Oh, you are really something, aren't you? See, you remind me very much of someone that I once knew, yet with a beauty all your own. Honestly, it's just inspiring to be standing here in front of you. You are the one who's inspiring, my dear. Seyka. Would you mind terribly if we did that one more? Oh. Seyka. Get away from her. Now I see! The Ginger Avengers finally caught up with me. Nova, how did the riffraff get past you? Nova? Nova's gone. She couldn't stand another minute with you, and I can see why. I thought the other Zeniths were disgusting. But you really are something, aren't you? Oh, yes. Yes! I am different than the others. Yes! Among other things, I have dug up a way to crush you like an insect. Oh, what a shame. Could have been my rising star. लगे नहीं पटना होगा इससे मुझे पता था ओके We're not done yet, Aloy! I'll pin it down! चल अरे तेरी अबे भाई मारने का मौका तो दे अरे बस भाई अबे यार तुम कर दिया कहाँ इसने अरे कोई भी मशीन चोट नहीं पहुंचा सकती भाई मेरी सिस्टर को अरे अब पता चल रहा भाई इंसान को पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है इतना नहीं तो सीखा की तरह पूछता रह जाता है इंसान फिर अरे डीएनए क्या होता है अरे कोई बोल रहा था भैंसो एक आंटी थी कोई ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना गांव की लड़कियां अच्छी होती है मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था मैं बुराई नहीं कर रहा गांव की लड़कियां बुरी होती है बट लोग कहते हैं ना गांव की लड़की लिया हुआ है सीधी साधी वो अच्छी होती है तो भाई सीखा भी गांव की लड़की है
ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, गेम देख रहे हो तुम लोग, पता ही होगा। और पता है एक रील थी, इसमें बुजुर्ग आंटी से रिपोर्टर पूछती है गांव की लड़कियां कैसी होती है, वो आंटी कहते हैं गांव की लड़कियां तो बावर चौथी सी होती है। गांव की लड़कियां, अरे गांव की लड़कियां तो बावर चौथी सी होती है। अद्दा भाई, वो भाई रील ना मेरे को बस में मिली थी, मतलब मैं बस में, मैंने इंस्टाग्राम खोला था घर आते हुए एक बार भाई साहब। और पता है वो रील वेंचर किसने भेजी थी, तुम लोगों की पलक दी थी ने। वेंचर कह रही ये देखो ये देखो, मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। वेंचर मैंने इंस्टा खोल के गलती कर दी थी बस में। वेंचर मैंने रील खोली, मैंने एयरफोन लगा रखा था। वेंचर तेज कैसा मैं, वेंचर सब लोग देख रहे हैं बस में, वेंचर क्या हो गया इसको, क्या देख रहा है ऐसा, वेंचर तेज कैसा है। वेंचर पलक भी उल्टी सीधी नीली भेजती है। वेंचर गाँव की लड़कियां तो बावर चौधरी सी होती है। अरे भाई पहली बार मैंने ये वर्ड सुना था बावर चौधरी, भाई इसका मतलब क्या होता है बावर चौधरी। कांचिका कह रही है जो भी कुछ कर रही है एलोय ही कर रही है, बस वही तो, जो भी कुछ कर रही है एलोय ही कर रही है बस। अर्पिता बोल रही है पता नहीं क्या पसंद आया एलोय को इसमें। वर्मा भाई कह रहे हैं एलोय की बंदी है इसलिए कुछ अब ज़्यादा बोल भी तो नहीं सकते है ना, ये भी बात है वर्मा भाई। अर्पिता कह रही है तो इसका मतलब सिका भी बाबर चौधरी है, पता नहीं भाई तुम लोग डिसाइड करो। वेंचर गेम वाले कहेंगे भाई अंग्रेज लोग तो गाना मार ही रहे थे, वेंचर ये इंडियन गेमर वेंचर खेल रहा है ये भी गाना मार रहा है हमारे कैरेक्टर की। वेंचर सिका भाई अंग्रेज लोग बड़ा चिढ़ रहे हैं भाई सिका कैरेक्टर से। जब ये गेम आई थी ना DLC तुम खेल रहे अभी DLC, भाई सिका के लिए बड़ा चिढ़ रहे थे लोग बाहर देश में भी भाई, बाकी कंट्रीज में भी। वेंचर क्या है ये सिका क्यों डाली और वेंचर क्यों बंदी क्यों बनाया भाई। एलोय वैसे वेंचर पिघली नहीं किसी पे, ठीक है। और वेंचर जो लड़की वेंचर बस थोड़ी देर में ही मिली है, थोड़ी देर में ही इससे प्यार हो गया एलोय को, मतलब कुछ सेंस बन रही है भाई। कोई कहेगा भाई गेम की स्टोरी में सेंस ढूंढ रहा है भाई, लॉजिक ढूंढ रहा है, वो बात नहीं है भाई। तो पूरी गेम में होराइजन 4 बीटन में वेंचर 17 घंटे गेम में एलोय ने रिजेक्ट करा सबको, ठीक है। अच्छे लोगों को भाई, राजा लोगों को, बट ना बावर चौधरी पे दिल लाना था एलोय का तो। भाई फाइट हो रही है, सीरियस हो जाता हूँ मैं। और बेंच सॉरी एलोय सॉरी। एलोय कहेगी बकचोदी कर ले तू पहले मेरी बंदी के बारे में। ओके कट सीन प्ले हो गया, इसकी बहन से मिलते हैं अब। अपनी बहन को भी गंवार चौदह बना रखा है क्या अपनी तरह, अभी तो बहकावे में आ गई, ठीक है वो। I think she needs some time to understand what happened. But she does know where more of our people are, and one of the boats that came in is docked nearby. We'll gather who we can and head back to the settlement. Okay. But then I need you to meet me near Laundra's bunker. He said he had a way to crush us like a bug, and I don't think he was talking about that slaughter spine. He's working on something big. Really big. I'll be there. I promise. It's the least I could do after you. Hey. We found her together. Good for you, Seyka. Well, since Nova shut off the Zenith defense system, I can fly out of here. Getting around on the skiff should be safe again, too. I've got to go after Laundra one last time. It's okay.
You're here. I'm guessing your sister made it back okay? She's with the Admiral's Guard now, helping the last of our people out of Landra's Park. Gives her something to focus on instead of brooding over what happened. I hope it helps. So what do you say we put an end to all this? Yeah, it's time. Let's get going. अरे वाह भाई वाह, दोनों सखी सहेली साथ में चढ़ती हुई पहाड़। ये क्या हॉलीवुड है बॉलीवुड है? अरे हॉलीवुड होगा छोटे। Okay, so Landra's probably in his bunker, right? We'll have to get back in there. Yeah, I don't think Landra's in the bunker. Back at the park, he said he's gonna crush us like bugs. Pretty sure he's gonna use that. But he doesn't have a reactivation signal to reboot its systems. He needs a more direct connection. You think he's actually inside that thing? It's his only option. We need to find a way to stop it from powering up. There. It looks like it's hooked up to some kind of cooling system. If we find a way to disrupt it, it might cause the Horus to overheat. That might be tricky. More machines brought back from the dead? I don't think so. Landra must have used the Horus to make them. We better hurry. Come on. Time to get to that cooling system. I'm with you all the way. Hello, Aloy. Is that you scurrying around down there? So good of you to make it to our grand finale. लॉस एंजलिस का सीन है। अंश भाई क्या बातें चल रही हैं? अंश भाई कह रहे वर्मा भाई को गेम पे ध्यान दे लो। क्यों ऐसे क्या बोल रहे हैं? देखो जरा, अभी रुक जाओ लोंडो यार, मैं बाद में पढ़ता हूँ लाइव चैट। गेम पे ध्यान दे लूँ मैं पहले। वर्मा भाई की तो बकचोदी चलती रहती है। Giving up. We can get up that way. Avoid that thing to get to the cooling system. Those ruins can give us cover. Our leading
यस अभी वन पीस में हम I think he's lost us for now. I'm going to find you. Steady. We should be fine if you lay low. Too scared to come out. That big overhang ahead can give us cover. Gotta get through that fire gleam. I can see them very well. You're an insignificant speck. I think we're in the clear for now. What are we gonna do if he wakes the whole machine up? It's ancient and slow. We're small and fast. We've got a chance. Up here. Where'd you crawl away to? Here we go again. More corruptors ahead. Aloy, come out, come out. You can't hide forever. Hiding among the weeds. It's only a matter of time, Aloy. Come out, come out. Whoa! Another arm's up and running. Come on, we better hurry. Let's keep moving. Cooling system's further up the hill. If any more parts of that thing wake up, we're in big trouble. Then let's keep moving. We'll have to hug the cliff to get by. Nowhere to go but up. It's gonna be hard to avoid attention here. A distraction might help. Or we could charge through. What are you up to down there? Now's our chance. Aloy, there You you see me? are. Not again! Corruptors are overlaying some machines. Gotta take them out. Get back here. ऐसा एलॉय बोल रहा है कि कहाँ पर है एलॉय साले को बताते भी हम कहाँ पर है उसकी मौत लेकर आ रहे हैं साले की I'll pin it down! Woo! Gotta deal with these machines first.
Okay, now to deal with the cooling system. Let's see if we can overheat the Horus with this thing. There's gotta be a way to stop its cooling. Maybe my focus can help. There. Destroying that might stop the Horus's cooling. What are you up to? There it is. Seyka, wanna do the honors? You got it. There we go. I'll get the other one for you. Yes! अरे भाई Alert. Temperature critical. It's working. Emergency heat sinks engaged. Uh-oh. Thought you had me, ladies? Think again. भाई साहब, ओ तेरी भाई, इसको कैसे लाएंगे हम लोडो? ओ भाई कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई, कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया बॉस। Still overheating. हमारी सिटी। He's heading for the bay. He's gonna use the sea to cool the Horus down. निपटाना तो हमें ही है भाई, पड़ेगा भाई निपटाना। Light. How are we supposed to stop that? There. On its underside. We gotta go after its heat sinks. You keep Laundra distracted from the air. I'll attack from below. Wait! You want me to fly this thing? You're a quick learner. Well, it's you and me now, buddy. वाओ, क्या कलर सारे लोंडो भाई, कलर्स कैसे चेंज होते हैं ना Gotta intercept the Horus, then go after its heat sink. भाई, निपटना तो पड़ेगा लोंडो इससे। This flying thing's not bad. Whoa! You're doing great. उसको मजा आ रहा है, सेका को। अरे ये उड़ने वाली चीज बेकार नहीं है इतनी भी, तो कह रही तो अच्छा कर रही है। लोंडो, ये फाइनल बॉस फाइट होने वाली है हमारी। We can't let it reach open water. Seyka, I need you to keep the Horus on the beach. On it! I'll be the bait! तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटे यार, टंग टंग टंग। इस गाने का मतलब और कुछ है लोंडो, कभी बताऊंगा तुम लोग को आराम से। ये लोंडरा ना, क्या ही बोलूं, थोड़ा बन रहा है हमारी जिंदगी का। ये लोंडरा रोड़ा बन रहा है हमारी जिंदगी का, और कुछ नहीं। हाल ही है। Yes, yes, yes. You got this, Aloy. आदि परे जा रही है।
सहीका कुछ कर तो सकती नहीं है, कुछ करने देने की तो है नहीं, तारीफ कर सकती है बस। अच्छा कह रहा मेरी टर्न है, ढूंढ रहा है। अब भाग रही है, पता है छुट्टियां में पता है। इतना हराना मुश्किल इजी नहीं है भाई, सर हराना मुश्किल कह रहा हूँ, सॉरी आसान नहीं है सर हराना। Seyka, keep Laundra busy while I deal with the machines. Shouldn't be hard to get his attention. लोहे भी कह रही है भाई इसको हराना मुश्किल है भाई, आसान नहीं है इसको हराना। कोई बात नहीं, कर दिखाएंगे लोंडो हम। भाई ग्राफिक्स देखो एक बार कैसे चेंज हो गया, कलर्स मतलब यार। अरे छोटे छोटे चुटपुंजे और आ गए। तो कह रहा मैं कभी नहीं हार सकता, ढूंढ रहा कह रहा नहीं पता साले, तेरे को हराना मुश्किल है साले। हम हरा के रहेंगे। यस यस तो होए लोहे कैसी शक्ल बनाती है भाई, लगती है तो ऐसा लगता है मैं जो मेरे को लग रही है। चारे का दर्द फेस पे आ जाता है। पानी देखो लोंडो क्या लग रहा है भाई, कलर्स देखो भाई, कलर्स देखना कैसे भाई मस्त हो गए एकदम, डेथ स्ट्रैंडिंग की तरह। ये गेम की एक खास बात लगी भाई मेरे को, दोनों गेम्स की। Aloy, I see another heat sink on the flank, but it's under some kind of cover. Let me scan it. Phew, that last shot was a close call. Aerial maneuvers won't save you. This one's got a cover on it. Spear might break it. I gotta get up there. Climb one of the legs. Too slow, Laundra. सेका कुछ कर भी रही है, उसको चिढ़ाया जा रही है उल्टा और लोंड्रा को कि बहुत स्लो है तू। Still kicking down there? Hard to steer this thing. Scaling a horse on the move. Right. Easy. Beats being the bait. Let's try this maneuver. Keep going. Almost there. Yikes! Almost took a hit. Time to shoot you down. भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जंगल वंगल पेड़ पौधे सब उठा रखा इसने लोंडरा ने। आले हमने 4 बीटन की मेन स्टोरी खत्म करी थी, तो ये डीएलसी क्या हमारा ये। भाई पानी देखो और ज्यादा मस्त लग रहा है भाई। ये स्पेट करते हैं। अरे तेरी इस सांस की चुम्मी। रुझा निशाना अब लग जाएगा, अब लग जाएगा। यस Look out! It's raining fire. You're nothing but a walking scrap heap. I'll hurl you and your machine into the dirt. Uh-oh! Fly, buddy, fly! शिट भाई श्वास नहीं हो रहा, इतने बड़े उससे लड़ रहा हूँ मैं लोंडो। देख लो भाई कितना बड़ा, भाई कितना बड़ा। It's charging again, Aloy. Get clear. Nothing. Well, your luck won't last. I'm not going down that easy.
Must be heating up in there. I don't know if I'll be able to keep him distracted. Just do what you can. What's it doing? Did we shut it down? I think it's cooling itself off. This could be our chance. Stay in the air for now. I'll check it out. Oh, we're not done yet. Careful, Aloy! The horse arms are closing in! Oh boy. It's you and me now, Aloy. Time to see what you're made of. Where do you want me? Stay up there. Keep a lookout. Okay. I think I see heat sinks on the arms. It's gearing up to attack. Now we're getting somewhere. Heat sinks exposed. Good shot. You think you're winning? Not even close. Nothing. अरे भाई साहब Let's try something else. What's he up to now? Those guns are powering up. बच गया मैं Uh-oh. Hatches on his back are open. That means incoming. Yeah. भाई साहब लोंडो शायद ही भाई कोई यूट्यूबर होगा बेंचो किसी गेम में बेंचो इतनी बड़ी चीज़ से लड़ा होगा भाई, क्योंकि किसी ने ये गेम खेली नहीं है बेंचो। इतनी अच्छी गेम थोड़ी खेलता है कोई। ना इतनी अच्छी गेम्स खेल ले इंडिया के 100 गोल्ड बड़े गेमर्स, ऐसा हो सकता है? हम ही खेलते भाई इतनी अच्छी गेम्स। अच्छी हो जाए कोई गेम बुरी, हम तो खेलते भाई सारी गेम्स। देखो लोंडो भाई कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा है भाई लोंडो, ये देखो एक बार दो भाई। फिर भी तुम्हारे बीएमजी भाई लड़ने में लग रहे हो। और एलोय ओ शिट तो मार दिया मैंने भाई। किल से जा रहा भाई, किल से जा रहा है तो लोंडो। जो मेन गेम थी होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, अभी भी हम खेल रहे हैं बट डीएलसी खेल रहे हैं, बट जो मेन स्टोरी थी उसमें मैंने इतनी मुश्किल नहीं आई थी ना एंड में, जो जितनी इसमें मुश्किल आ रही है भाई। उसकी फाइनल बोस फाइट इतनी खतरनाक नहीं थी भाई, उसमें तो साइलेंस ने कमाल कर दिया था। इसमें बेंचो कुछ ज़्यादा खतरनाक सीन नहीं हो रहा, उल्टा भाई पहली कोई डीएलसी खेल रहा हूँ बेंचो जिसमें ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है मामला। सीरियसली लोंडो, गॉड ऑफ वॉर की डीएलसी खेली, रेसिडेंट एविल की डीएलसी खेली हमने, उसमें बेंचो इतनी दिक्कत नहीं आई उन गेम्स की डीएलसी में। बेंचो इस गेम की डीएलसी तो और ज़्यादा खतरनाक है भाई, क्योंकि मेन गेम से भी ज़्यादा खतरनाक है डीएलसी भाई इस गेम की तो। अरे भाई वैसे कुछ इतना था नहीं डीएलसी में, बट भाई फाइनल बोस फाइट देखो कितनी तगड़ी लोंडो इस गेम की डीएलसी की। मतलब मेन गेम हमने ख़त्म करी है परसों करी है हाँ भाई। मेन गेम की फाइनल बोस फाइट इतनी तगड़ी नहीं थी, ये डीएलसी की देखो। गॉड ऑफ वॉर वलाला खेली डीएलसी मैच, उसमें फाइनल बोस फाइट इतनी तगड़ी नहीं थी। अरे भाई शिट। हाँ रेसिडेंट एविल की भी फाइनल बोस फाइट तगड़ी, रेसिडेंट एविल की डीएलसी की ना की भी थी, बट इतनी तगड़ी नहीं थी भाई जितनी इसकी है भाई। क्यों तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया लोंडो। हम छोटे से मैच इतना बड़ा सा ये ढेर सारे हाथ पैर वाला भाई साहब।
चीटी लग रहे भाई इसके आगे, कर रहे भाई फिर भी हम कैसे कैसे। इसमें भाई इस बॉस फाइट में ना बचना है भाई, और कुछ नहीं, बच के अटैक करना है, बचना सबसे ज़्यादा है भाई। अगर बंदा बच गया ना तो सर्वाइव कर सकता है, और मैं बचे जा रहा हूँ। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना बच रहा हूँ भाई मैं इसके अटैकों से। अगर नहीं बचा तो मेरा काम हो गया भाई, बचना तो पड़ेगा भाई। ये बच गया मैं। पहला ऑक्टोबस सा नहीं क्या है अजीब सा। अरे लोंडरा तेरे को तो मार के रहेंगे हम, ये इतने ढेर सारे इसके शिप। परेशान हुआ ना अरे भाई वर्मा भाई कह रहे हैं DLC की फाइनल बॉस फाइट तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी है सच में। वही तो मैं कह रहा हूँ यार। मैं तुम लोगों से कह ही रहा था भाई, DLC हटके होने वाली है, ठीक है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, बट छोटी सी होगी। बट भाई बॉस फाइट में तो मज़ा आ रहा है भाई। अभी जहर है भाई, जहर कतई। लोंडो बस आधा घंटा और भाई फिर खत्म ये गेम। फाइनल बॉस फाइट में टाइम लग रहा है लोंडो। ऐसे तो अब गेम में कुछ बचे ही नहीं है, बस बॉस फाइट में ज़्यादा टाइम लग रहा है लोंडो। साला हारने का मन ही नहीं बना रहा है ना अपना। अलग अलग हेल्थ बार है इसके हर एक पैर के। जो भी कुछ है भाई यही बॉस फाइट है भाई इस गेम में। जो भी कुछ बच रहा है ना, ये फाइनल बॉस फाइट बच रही है। बाकी का जो लास्ट के 2 मिनट है उसको तो काउंट करना बेकार ही है, वो तो ऐसे बीत जाएंगे। बाकी यही मेन चीज़ बच रही है भाई। अब में टाइम लग रहा है। वरना लोडो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ख़त्म करने की इसको, ताकि तुम लोग टाइम पे सो पाओ भाई। फिर ओ भाई इसी का ऐसे बता रही जैसे हमें तो दिख नहीं रहा, मंदिर उड़े हैं। चिट ये लगाऊं हम, ठीक है। यस ये बैच गया लोंडो, गया हो गया क्या? नहीं अभी कहाँ हुआ है वेंचर। अरे रुक जा भाई रुक जा, म्यूजिक कैसे बज रहा है? नो आई एम शिट। ए तेरी might have breached the hold. I gotta get inside and find Londra. हाँ इसके अंदर जाना पड़ेगा लोंड्रा को ढूंढना पड़ेगा। अभी तो हमने इसकी मशीन को हराया है। लोंड्रा साला अंदर है अभी भी इस मशीन के भोसड़ी का। It's breaking down. Good. Better get in there before Londra makes repairs. A light. It could be coming from inside.
the breach. It might be my way in. Okay, I'm in. Now to find Londra. Aloy! Londra's bringing the horse back up to the surface. I'll climb up and find him. Londra has to be wired in to control this thing. That makes him afraid. He's gotta be near the processing unit at the front. Catch me if you can! इनको रात कहेगी तो मैं रात कहूँ तेरा दिल दुखाए Gonna time my jump up. ऐसी ना बात करूँ एक चिकन इमाते पे ना आए मेरी जान. You okay in there? Getting there. You? Londra took a couple swipes at me, but I outflew him. Just hold on a little longer. मैं तो ना कहूँ भाई दिन को रात कहेगी तो रात कहूँ ना भाई अब कल है भाई मैं नादान वाला थोड़ी हम जैसे नादान वालों को भी बड़े यूट्यूबर कहते हैं दिन को रात तो बोलते हैं हाँ दिन को रात पीबीआशू और पीबीआशू अरे टकरो भाई दिन को रात बोलेंगे हम भी Looks like those vents don't stay open for long. Yeah, whatever! Made it. इसी का लड़ने में लग रही है इसका काम नहीं है कुछ इसे लड़ने में लग रही है उससे लोंड्रा से लोंड्रा कह रहा है मैं मार डालूंगा तेरे को तुम लोगों को इसी का उससे लड़ने में लग रही है इसी का कुछ काम की भी है बातें चोदे जा रही है पर हम रहे हैं धमकी ये दे रही है सही है भाई अरे बहन ओ भाई साहब झटके आ रहे कैसे बस सुन क्या मैं जा चुप चुप के निकलना पड़ेगा एक और आ रहा है एक और आ रहा है यस जल्दी 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 भाई कहाँ का घुस रहे भाई इस डीएलसी में भाई डीएलसी तो बढ़िया भाई सकते Aloy, the horse is heading inland towards the coast. Almost to Londra. Stand by. ये रास्ता ला How unwelcome. ओ भाई ये तो वो नहीं बन रहा एक वो वाला अरे एक वाला विलन नहीं होता अवेंजर्स में अवेंजर कार्टून आता था उसमें विलन होता था इलेक्ट्रोमैन होता था कौन सा होता था वो बिजली छोड़ता था मैं ये लोंड्रा तो बिल्कुल वैसी ही है बिजली नहीं छोड़ता लोंड्रो एक वो होता है स्पाइडरमैन में भी है तो बिजली वाला तो बिजली छोड़ता रहता है हर जगह क्या नाम होता है उसका भूल गया मैं कि वो है लोंड्रा साला याद नहीं आ रहा मेरे को विलन का नाम याद नहीं आ रहा तुम लोग को याद होगा शायद तुम लोग तो अभी भी छोटे हो बट मैं काफ़ी बड़ा हूँ इसलिए मेरे को याद नहीं है भाई अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी आया था स्पाइडरमैन से पंगे लेने वो विलन करंट छोड़ने स्पाइडरमैन उसे मज़ा चका देता है इलेक्ट्रोमैन होता है पता नहीं क्या नाम होता है उसका कि याद आ गया मेरे को नहीं बोला ना मैंने इलेक्ट्रो आंच भाई कह रहे इलेक्ट्रो देखा सही नाम बोला मैंने याद तो है यार मेरे को नाम याद तो है मैं भी ना एक शिकन की माथे पे ना आए मेरी जान Can't keep the shield up when he attacks.
एज में गोबलिन कौन था? अरे गोबलिन यार वो था, होता है हरा हरा सा कलर का। हरा हरा कलर का होता है। रुक जाओ, ये याद करता हूँ मैं भाई। अभी लड़ने दो भाई थोड़ा, मेरा इधर दिमाग है। Right until Nemesis rips apart your pathetic planet! Whatever you say! No, it can't end like this! वो अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी होता है ना गोबलिन, शायद हरा हरा कलर का होता है, पंपकिन से फेंकता रहता है, ऐसे कुछ करता है, अटैक अजीब से करता है, जोकर गैप पहना रहता है, अजीब सा कुछ होता है ना, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, शायद वही होता है। कि भाई तुम लोग क्या मेमोरी का टेस्ट ले रहे हो क्या? मेरी मेमोरी का टेस्ट ले रहे हो तुम लोग? अब मेरे को जितना याद है मैं उतना बता देता हूँ ना। इलेक्ट्रोमैन मेरे को याद था, से याद आया लोंड्रा देख के मेरे को, लोंड्रा से याद आया मेरे को इलेक्ट्रोमैन। पर्पल सा कलर का होता है, हरा कलर का होता है, और क्या आइडेंटिटी बताऊँ उसकी? आधार कार्ड ला के दूँ क्या? अब दिल ले गया साले तू। वाह क्या सीन है भाई, ये Aloy कर देगा भाई साहब। You really do ruin everything, don't you? Seyka, I'm inside this thing's head. Gonna need a quick exit. On my way! Damn it! Come on! Hold on! ए कर दिखाया बेबी जी भाई, हाँ कर दिखाया ब्रह्मा भाई, कर दिखाया। नॉर्मल ऑसबोर्न होता है एरी का बाप। अच्छा चल वे आ गए ऊपर फाइनली, खत्म होने वाली है गेम। मेन चीज खत्म हो ही गई वैसे तो, मार दिया विलन को। डीएलसी भाई तगड़ी थी भाई, तगड़ी बॉस फाइट थी, मजा आया। देखते इन लौंडियों के बीच में क्या होगा। We did it. I wonder what everyone back in the settlement thinks about what just happened. To see a metal devil rise from the dead? Guess you better report to the Admiral and find out. Go on, it's okay. I'll catch up. Don't leave me waiting too long. Silence? It's done. Londra's dead. Excellent. I expect he put up a fight. Yeah, you could say that. He, threw a Horus at me. Did he? That couldn't have been easy to defeat, even for you. I had help from one of the Quen. And I'm sending you some data from Londra's implant. See what you can find out. Londra's personal logs should indeed be fascinating. I'll keep you posted on my progress. With Londra gone, I could poke around the burning shores for a bit. Or I could head for Fleet's End and get back with Seyka. TNG भाई ने कर दिखाया। हाँ भाई मैंने नहीं, एलोय ने भी कर दिखाया भाई। प्रोटैगनिस्ट भी सब कुछ होता है भाई। Aloy, when we saw the metal devil rise from the hills, it was as if the time of ashes had come again. To think the two of you defeated it by yourselves, it staggers the imagination. And that's not even your most important feat, as far as I'm concerned.
thank you for returning our lost brothers and sisters. What else can I say but that we are in your debt? All I ask is that you give my friend here the credit she deserves for all the risks she took. I would have it no other way. Is he gonna try to take your focus? I was wondering the same thing. Well, he can't. You're gonna need it. I'll show you why. या कुणाल तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड है कि क्या चूज करोगे एलोय के लिए. देखते तुम्हारा Seyka, इंटरेस्ट. meet Alva. The two of you will need to coordinate in order to reunite the expedition. Beta briefed me already. I'm so glad to see you guys. You should have heard the cheer that went up when I told the others here in Landfall that your half of the fleet survived. To find her, Alva. It's an honor. Likewise. Well, we can chat about all the details later. For now, shouldn't you two be celebrating the fact that you just took down a Zenith and a Horus? Come on. Away with you. Yeah, to be honest, I'm pretty terrible at celebrating. I don't even know where to begin. Well, I'm a sailor, so it usually starts with alcohol. I think we have some bilge blaze. You know, spirits distilled from whatever hasn't spoiled in the ship's stores. Oh. You make it sound so good. Yeah, it's not really for beginners, so you get a pass this time. Okay. But there is something I wanted to talk to you about. Meet me back where we first met when you can, okay? Okay. I'll see you there. क्या मिलते तेरे से वहाँ पे? पीछे क्या करने बुला रही है लौंडा ये? क्या बात करना चाहती है उनसे? पीछे बुला के. So, Seyka wants to talk. It's good. And I know I need to move on soon, but I'm not really ready to say goodbye to her just yet. Before I find her, maybe I should look for her sister around the settlement, just to see how she's holding up. फीलिंग जाग रही है, फीलिंग जाग रही है. हेलो, एक फीलिंग जाग रही है. कह रही मैं बाय नहीं कहना चाहती हूँ उसको, और कह रही है कि फाइनली वो बात करना चाहती है मेरे से. हेलो. Looks like some of the clan from Lange's bunker came back. My sister's friend. I'm glad they came to their senses. से बात करते पहले. Hi, Kina. I'm Aloy. We didn't get properly introduced before. Of course. Seyka told me about everything you did to bring me back. You must think I'm such a fool. No. I keep replaying everything in my mind, and I still can't understand how I could have been so wrong. When Walter appeared to us, he really did seem divine. Well, he had a lot of experience manipulating people. Centuries, really. He promised a whole new world, with me at his side. To think it was all a lie, and I fell for it. Look, you've been through a lot. I'm sure it will take you some time to work through it. Just try to remember that Seyka's been through a lot too, okay? She risked exile to find you, not to mention death. And I abandoned her. I don't know if she'll ever forgive me. She will. But you might have to work for it a little. I'll do my best. Good luck, Kina. ये तो एलोय की साली लगी ना? इसकी सिका की बहन है. तुम लोगों की बीएनजी भाई रिश्ते बनवा लो, हैं? रिश्ते बनवा लो. फाइनल है. चल भाई, चलते लौंडो सिका के पास. फाइनली जिसका मुझे था इंतजार. देखो पानी के अंदर भी है. हमारा पक्षी क्या नहीं कर सकता. एलोय बड़ी खुश हो रही कि फाइनली वो मेरे से बात करना चाहती है. कंफ्यूज हो रही है एलोय. हाँ, होता है अक्सर ऐसा होता है. So, Seyka's waiting for me where we first met. अच्छा, एलोय कह रही है वहाँ पे वेट कर रही है सिका जहाँ पे हम पहली बार मिले थे. Right? एलोय कह रही है कुछ रीजन नहीं बनता, मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ. हाँ, नर्वस तो होएगी. होता है ऐसा अक्सर होता है. पहले प्यार में होता है ना एलोय.
कह रही वहीं बुलाया है सिखाने जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। हाँ करते हैं बात लौंडो। अलिया जब भी बोल रही थी कुणाल तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। Got your sister back, your people. What's next for the woman of the hour? You're the one who ripped apart a metal devil from the inside. I think you should get a bit of credit too. Maybe a little. As for what's next, the Admiral's going to need my help to reunite our half of the expedition with Alva up north. And after that, I don't know. I don't think things will ever be the same with my sister or my people. You're not gonna sail back with him? I want to see home again. Someday. But things have changed. The Quen don't know what to do with me, and I don't know where I fit in. I guess you know what that's like. Yeah. For a long time, I hated the idea of home. For me, it meant where I grew up, where I wasn't wanted. But the thing is, the last few months, I've realized that home isn't really a place at all. अच्छा? It's more like the people I want to be with. Oh. I like that. And, well, more and more I've been thinking, I want to be with you. And I was hoping that you felt the same way. गाना देख कैसा बज रहा है पीछे। क्या करें? ये साइड कर दे। यस। हमारी भी हाँ। What if I do? अगर हम करें हाँ तो? I think I know how to handle it. मैं जानती हूँ कैसे हैंडल होगा। ओए होए, अरे भाई मेरे ऊपर डिपेंड था भाई, मैंने तो घर बसा दिया भाई, इसलिए मेरे ऊपर डिपेंड था तो भाई मैंने तो कर दी इसलिए। वो अलग कह रही है वाओ, पहले प्यार का पहला एहसास, पहली किस, मेरे जी भाई ने मामला सेट करवा दिया। भाई मेरी आदत है भाई घर बसाना भाई लोगों का। There are things I have to do too, but it's enough to know how you feel. I don't know when I'm gonna see you again. बेचारी कब तक अकेली घूमती? But no matter what happens, just don't forget about me. Okay? बारह करो एक और बार किस। करिए नहीं छोड़ के जाऊंगी कभी। अरे अब तो हग्गी वग्गी हो गई भाई। बेचारी कब तक अकेले दर दर फिरती लोंडो। अब इसको साथ में ले लेके दर दर फिरेगी तो अच्छा रहेगा ना। वाह भाई वाह, क्या बीएमजी भैया अच्छा ही चूज करेंगे, जो भी चूज करेंगे। लो अच्छा ही चूज करा लोंडो मैंने एलोय के लिए। चलो भाई घर बसा दिया हमने। गेम खत्म होते होते जाते जाते हमने घर बसा दिया भाई एलोय का। एलोय का भाई कंप्लीटेड लोंडो इस फाइनल एक्ट। क्या म्यूजिक बज रहा है भाई। चलो डो खत्म। लोंडो लिखा चुका है भाई, आउटरो आ रहा है, बर्निंग सोर्स, ठीक है। लोंडो भाई लोंडो भाई साहब, फाइनली हमारी होराइजन सीरीज खत्म होती है ये, ठीक है। हैप्पी एंडिंग करी भाई तुम्हारे बीएमजी भाई ने। हाँ भाई अंश भाई सही बोला, हैप्पी एंडिंग। या बेबी हाँ भाई लोंडो हमारी ये होराइजन सीरीज खत्म होती है। मतलब हमारी खुद की सीरीज नहीं थी, मतलब होराइजन सीरीज से मेरा ये मतलब ये है कि मतलब हमने होराइजन 1 खेली, फिर होराइजन 2 खेली, और हमने अब होराइजन 2 की डीएलसी खेली जो कि ये है, ठीक है। तो हमने डीएलसी भी कंप्लीट कर ली है। पहले तो मेन गेम हमने मेन गेम कंप्लीट करी थी, अब हमने ये डीएलसी भी कंप्लीट कर ली है। तो लोंडो एक तरह से हमारी पूरी होराइजन की सीरीज कंप्लीट होती है। होराइजन 0 डॉन, होराइजन 1, होराइजन 2, होराइजन फोरबिडन वेस्ट, और अब
होराइजन फॉरबिडन वेस्ट की डीएलसी। रोंडो जाते जाते बहुत ही अच्छी एंडिंग हुई, ठीक है। जैसे होराइजन फॉरबिडन वेस्ट की मेन कहानी की हुई थी, मेन गेम की एंडिंग हुई थी बहुत ही अच्छी, ठीक है। तो वैसी डीएलसी की भी एंडिंग बहुत ही अच्छी हुई। इसकी तो एंडिंग कुछ ज्यादा ही अलग हुई, रोंडो कुछ ज्यादा ही अच्छी हुई। तो तुम लोगों को मेरे पे विश्वास था कि बीएमजी भाई, बीएमजी भैया वो भी चूज करेंगे, अच्छा ही चूज करेंगे। एलोय ने जाते क्या बोला पहले, पता है क्या बोला? पता है क्या बोला? कि अच्छी लग रही है तू, हाँ, तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। आह 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 भाई, एलोय ने भी अपने पहले प्यार का पहला एहसास महसूस कर लिया, बस हम ही नहीं कर पा रहे। तो पहली पुच्ची भी महसूस कर ली, एहसास कर ली एलोय ने। ये मत कहना कि जेंडर सेम था भाई, जेंडर हाँ वो तो है, वो तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है टॉपिक की, जेंडर सेम है। सेम जेंडर के साथ एहसास करा पहला प्यार, वो अलग बात है, बट करा तो। तुम लोग ये मत कहना बीएमजी भाई आप भी किसी लोंडे के साथ पहले प्यार का पहला एहसास फील कर लो। ना 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 भाई ना, इतने इतने बुरे दिन नहीं आए भाई हमारे। ना ना ना, हमें ऐसी चीज ही नहीं है भाई। नहीं भाई, वो चीज अंदर होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग ना कि सेम जेंडर से प्यार हो जाए। वो एलोए में है और एली में है, हमें नहीं है। या फिर तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि एलोए जब बन रही थी तो कुछ उसमें डिफेक्ट आ गए थे जिससे वो लेस्बियन बन गई, है ना। बट एली का क्या सीन था लास्ट ओवर में? वो तो इंसान थी ना। तुम्हारी आलिया दीदी क्या कह रही थी? अब कुणाल तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड है तुम क्या चूज करोगे एलोए के लिए। देखती हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट। देख लिया तो देख लिया इंटरेस्ट, देख लिया। ये नहीं कि मैं लेस्बियन वाला इंटरेस्ट है, ना 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 ना। में इंटरेस्ट है घर बसाने में लोगों का, ठीक है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे गेम हो, ठीक है। वो अलग बात है, हमारा घर नहीं बस पा रहा है खुद का, ठीक है, इसलिए हम दूसरों का घर बसाते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा किसी का घर तोड़ के ढूंढो, लेस्बियन हो चाहे गे हो, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, बट फिर भी ठीक है। अगर कोई मिल रहा है तो मिलने दो, प्यार के फूल खिलने दो, प्यार के गुण खिलने दो। ओहो हो गई बकचोदी बहन जी भाई, हो गई बकचोदी है। तो ठीक है लोडो, बहुत ही मजा आया। ये गेम भी बहुत अच्छी थी, मतलब गेम तो नहीं थी, गेम तो मेन जो थी हमने खत्म कर ली थी। ये डीएलसी, ठीक है। तो लोडो डीएलसी भी बहुत अच्छी थी इस गेम की, है ना। स्टार्टिंग में तुम लोग थोड़ा बोर होगे कि अरे क्या कर रही है लो, ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है भाई, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एंडिंग बहुत अच्छी थी। बॉस फाइट में भाई सबसे ज्यादा मजा आया लोडो मेरे को, बॉस फाइट में भाई कतई जहर भाई, ठीक है। डीएलसी में कुछ इतना ज्यादा नहीं था, एक ही चीज करनी थी, लोंड्रा को पकड़ के मारना था, ठीक है। और हमने वो किया, उसी के चक्कर में 4.5 घंटे की डीएलसी बनी है लोंड्रा को खत्म करने के लिए। तो हमारी स्ट्रीम भी अब 4.5 घंटे की होने वाली है। 4 घंटे 29 मिनट 53 सेकंड 54 सेकंड 55 सेकंड 56 सेकंड 57 सेकंड 58 सेकंड 59 सेकंड। लो हो गई 4.5 घंटे की स्ट्रीम, करेक्ट, ठीक है। तो ये डीएलसी भी बहुत अच्छी लगी लोंडो, तुम लोग कैसी लगी तुम लोग बताना, ठीक है। अंश भाई कह रहे कंप्लीटेड, मजा आ गया बीएमजी भाई। यस यस लोंडो, हाँ भाई अच्छी लगी डीएलसी भी बहुत लोंडो। अब जल्दी से स्ट्रीम ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी गेम भी कंप्लीट हो चुकी है, एंड हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, ठीक है। जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 बजने वाले हैं। मैंने तुम लोगों से 2:30 बजे का बोला था, बट क्या करें लोंडो, बॉस फाइट मेरे ऊपर नहीं थी ना, मुझे क्या पता था कि तगड़ी बॉस फाइट होगी इसमें। मैंने सोचा था मैं निपटा दूंगा, बट निपटा दिया लोंडो मैंने, फिर भी बॉस फाइट निपटा दिया। वो अलग बात है थोड़ा लेट निपटाया, बट निपटा दी लोंडो। बाकी यूट्यूबर से तो ये भी नहीं पड़ता ना। बाकी स्ट्रीम में थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया क्योंकि हमने लेट स्टार्ट करी थी, 10-20 पे स्टार्ट करी ना शायद हमने, तो इसलिए खत्म करते करते भी लेट हो गया है ना। अच्छी लगी ये डीएलसी बीएमजी पर मुझे, ठीक है ब्रो। बाकी मुझे गॉड ऑफ वॉर की डीएलसी से ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है। ऐसे मेरे को रेसिडेंट इविल 8 की डीएलसी में मज़ा आया था, शैडोज ऑफ रोज में, और बाकी इसमें मज़ा आया। हाँ मेरे को याद आया, हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट रोज भी तो थी लोंडो, रोज भी अच्छी थी वैसे। हाँ रोज का चक नहीं था भाई लेस्बियन वेस्बियन का, रोज भी अच्छी थी भाई, वो तो हमारी बेटी की तरह थी। ये भी हमारी बेटी की तरह थी, लो तो यार
बाकी रोज से तो कनेक्शन जुड़ गया था क्योंकि हमने रेसिडेंट इवल 7 से खेली वो गेम। तो रेसिडेंट इवल 7 में वो छोटी सी होती है, ठीक है, सॉरी 8 में वो छोटी सी होती है, रेसिडेंट इवल 7 में पैदा ही कहाँ होती है, नहीं पैदा होती नहीं होती, याद नहीं आ रहा मेरे को। खेली हमने, खत्म करी है भाई, मैं भूल गया, मेरी याददाश्त भी ना। 8 में इतना पता है, मेन गेम में वो छोटी सी होती है रोज, हमारे हाथों में ही तो पली थी भाई, हम उसे दूध पिलाते थे, हम उसे सुलाने ले जाते थे रोज को, इसलिए हमारा भी कनेक्शन वैसे ही जुड़ गया था, बेटी और बाप वाला, बाप बेटी वाला, ठीक है यार। गेम ही इतनी अच्छी होती है स्टोरीज वाली कि हमारा कनेक्शन भी वैसे ही जुड़ जाता है जैसा प्रोटैगनिस्ट का होता है दूसरे से, है ना। हम भी तो एक तरह से गेम के अंदर ही होते हैं, और मैं तो गेम के अंदर ही घुसता हूँ, हर गेम के अंदर ही घुस के खेलता हूँ मैं तो हर गेम को। ठीक है लोगों, अब ये स्ट्रीम, ये एपिसोड यहीं कंप्लीट करते हैं। हमारी ये होराइजन की गेम्स कंप्लीट हो गई है, डीएलसी हमने कंप्लीट कर दी। बड़ा दुख हो रहा है लोगों मेरे को, पता है पहले उम्मीद थी कि चल डीएलसी तो खेलूंगा, ठीक है, बट अब तो डीएलसी भी कंप्लीट कर दी, अब क्या खेलेंगे लोगों होराइजन की गेम, है ना। अब कोई गेम ही नहीं बची होराइजन की, है ना। तो अब तो नेक्स्ट गेम होराइजन की सीधा एक ही गेम खेलेंगे, होराइजन 3, और वो नहीं पता मुझे कब आएगी होराइजन 3, अभी बहुत टाइम है होराइजन 3 गेम आने में, और मुझे नहीं पता होराइजन 3 कैसी होएगी जब वो आएगी। तो मैं चाहता हूँ एलॉय जैसी अभी है ना होराइजन 3 में भी ऐसी रहे। हाँ चेंजेस हो जाएं, थोड़े चेंजेस तो लाने पड़ेंगे एलॉय में लुक वाइज, बट इतना ना लाए कि एलॉय पहचान में ना आए, है ना। एलॉय को ऐसी सेम रखे तो अच्छा रहेगा गेम वाले, है ना। बाकी गेम वालों पे डिपेंड है भाई, जब फ्यूचर में आएगी होराइजन 3 तब पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट गेम जो भी खेलेंगे होराइजन की, तो होराइजन 3 खेलेंगे लोडो। अब ये नहीं पता 2027 में आएगी, 26 में आएगी, कब आएगी, ठीक है, होराइजन 3, ठीक है लोडो। बाकी ये हमें 2 गेम्स तो अच्छी लगी, तीसरी है डीएलसी हमारी, ठीक है, 8 हमारा छोटा सा डीएलसी होराइजन फोरबिटन वेस्ट का। तो ठीक है लोडो, मैं एंड स्क्रीन प्ले करता हूँ, बंद करता हूँ स्ट्रीम, 3 बजने वाले, तुम लोग को सोना भी है यार, कल तो रोब्लोक्स में लेट हो गया था। रोब्लोक्स में तो अंश भाई कहते हैं पूरी रात खिला लो बीएमजी भाई, मैं बोलता भी अंश भाई को स्कूल नहीं जाना क्या, अरे नहीं स्कूल तो माँ चुदाने भाई, रोब्लोक्स खेल रहा हूँ आज मैं बीएमजी भाई आपके साथ। रोब्लोक्स में मेरे को परवाह नहीं रहती, स्कूल में आग लग जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। तुम लोगों को सपने आते कभी कभी यार, तुम लोगों की इच्छा जगती है कभी कभी। मैं जब छोटा था ना, मैं बताऊँ क्या सोचता था, स्कूल में आग लग जाए बंचो। तुम लोग कभी सोचते थे ऐसा? मुझे नहीं लगता तुम लोग सोचते होगे, बट ज्यादातर मेरी जनरेशन के बच्चे तो यही सोचते थे बचपन में कि स्कूल में आग लग जाए बेंचो, स्कूल टूट जाए, भूकंप आ जाए बेंचो, ठीक है, बेंचो स्कूल ना जाना पड़े, बेंचो स्कूल डिस्ट्रॉय हो जाए, बेंचो स्कूल में बाढ़ आ जाए, बेंचो स्कूल बाढ़ में बह जाए बेंचो, ठीक है, स्कूल जाना ही ना पड़े बेंचो फिर, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे सपने देखता था बेंचो, तो ऐसे ऐसे सोचता था मैं, स्कूल ना जाना पड़े। भाई स्कूल से बहुत चिढ़ रही है मेरे को सीरियसली ढूंढो, जब तो मैंने 10वीं पार करी भाई जल्दी जल्दी। मैंने कहा भाई 10वीं पार करूँ, बेंचो इन चूती के बीच में से लिख लो भाई, मैं ये बेंच रोने से लिख लो भाई, मैं दूर भाई, अरे भाई कोई बचा लो भाई, ऐसा हाल रहता था भाई मेरा भाई, 24 घंटे किलसा रहता था, 24 घंटे। अरे कोई मेरे से पूछता था ना, हाय कुणाल कैसा है, मैं बोलता था क्या है वे, क्या करेगा मेरा हाल जान के, ऐसे रहता था मैं सच में। ऊपर से बेंचो जिस स्कूल में पढ़ा हूँ मैं बचपन से, बेंचो सारा जाड़ गुजरों का स्कूल, बेंचो सारा दिमाग खराब करते रहते थे चूतिए कहीं के। मैं नहीं कह रहा जाड़ गुजर बुरे होते, बट भाई चूतिए दिमाग खराब करते रहते थे भाई मेरा, सीरियसली चूतिए बच्चे होते थे। हाँ मेरे और भी जाड़ गुजर दोस्त है जो कि अच्छे हैं, ठीक है, बट भाई जो स्कूल में थे ना भाई, एक नंबर के गांडू बच्चे थे भाई सीरियसली। बेंचो हरी हरी नाक बहती रहती थी उनकी नाक से। भाई हरी हरी कलर की नाक बहती रहती थी उनकी नाक के अंदर से भाई। लोंडो सोचो कितने गंदे बच्चे थे भाई, आए हाय गोबर की बदबू आती रहती थी 24 घंटे उनके पास से। छी, केजरीवाल आया, उसने अच्छा स्कूल बनाया, सब कुछ अच्छा दिया, अच्छे टीचर दिए, बट भाई यहाँ के बच्चे लायक नहीं थे भाई, ना अच्छे स्कूल के ना अच्छे टीचर के भाई, सीरियसली भाई। कहते हैं ना भाई गांडू को भाई कितना भी अच्छा महल खड़ा करके दे दो, पर उसे करनी गांडू बनती है महल में भी। एंड प्रूफ भाई। भाई मैं तो इसलिए कहता था भाई 10वीं आए और बेंच में 10वीं पार करूँ, लिख लूँ बेंच स्कूल से, साला ओपन से कर लूंगा 12th बाद में इंजीनियरिंग करते करते। तो ठीक है लौंडो यार, वो तो ये बच्चे दियो, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट प्ले करता हूँ मैं, ठीक है।
बाकी आज दोपहर को हम कौन सी गेम कंप्लीट कर देंगे, तुम लोग कहोगे बीएनजी भाई आप हमेशा बोलते हो और बहन चो करते हो अगले दिनों फिर। नहीं भाई, ज्यादातर नहीं होता लोंडा ऐसा, ऐसा नहीं होता लोंडो, ऐसा नहीं होता। हमेशा मैं डिले नहीं करता हूँ, तुम लोग बताइए। तुम लोगों को पता ही है भाई। रुक जाओ अंश भाई, रुक जाओ यार। रुक जा, पढ़ रहा हूँ अभी चैट में, पढ़ रहा हूँ अभी, मैं एंड नहीं कर रहा, तुम लोग की सुन के ही करूंगा भाई, रुक जाओ। तुम लोगों को पता ही है मैं कभी भी डिले नहीं करता हूँ, ठीक है। डिले हो जाता है तो भाई टेक्निकल इशू की वजह से होता है, या फिर वाईफाई के लोड़े लग जाते हैं, या फिर मेरी जिंदगी के लोड़े लग जाते हैं। तो भाई अब तो वाईफाई के लोड़े लगते नहीं, ठीक है। बाकी बोर्ड की चुतना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, कल परसों से। तो बोर्ड मैंने ठीक कर दिया है पापा ने, मतलब, ठीक है। तो अब बोर्ड की नहीं चुदेगी भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसा कि नहीं चुदेगी। बाकी भाई किस्मत की चुद गई तो अलग बात है, ठीक है। किस्मत की चुद गई तो भाई कुछ भी चुद गई भाई, फिर तो सारी चीज चुद गई भाई, फिर तो मैं भी चुद गया मैं, फिर तो बावला हो गया मैं, तो मैं दुखी हो गया भाई मुझे किस्मत से अपनी भाई, मैं सीरियसली। इसलिए तो गेम्स में मैं नाम रखता हूँ MK, मादर चौथ किस्मत। तो भाई ड्रैगन डोगमा भी मैंने ये नाम रखा है, तो मोटर जीपी में तो ये रखा था मैंने कहा। तो भाई आज पक्का स्ट्रीम करेंगे हम, ठीक है, बियॉन्ड दी टू सूल्स की, ठीक है। और शाम को ड्रैगन डोगमा 2 की, ड्रैगन डोगमा 2 की तो करी तो थी कल शाम को मैंने स्ट्रीम करी थी। अब तो अगला दिन लग गया ना, इसलिए कल बोल रहा हूँ मैं, तो 27 में ही लग गया, मंगलवार लग गया। तो ड्रैगन डोगमा 2 की तो करी थी हमने, ठीक है। तो तुम लोगों जैसे कि तुम लोग को मैंने बताया था, बट अंश भाई आए नहीं थे, अंश भाई सो रहे थे, तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। और यार बताने की जरूरत नहीं है यार, यूट्यूब चैनल चेक कर लिया होगा, मैंने सारी स्ट्रीम शेड्यूल कर रखी है, सारे एपिसोड मैंने शेड्यूल कर रखे हैं, तुम लोगों को पता ही है, मैं शेड्यूल कर देता हूँ पहले से, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि आज हम 2 गेम्स कंप्लीट कर देंगे, बियॉन्ड दी टू सूट्स और ड्रैगन डोगमा 2, ठीक है। फाइनल एपिसोड में आ जाना, टाइम से आ जाना, ठीक है। बियॉन्ड दी टू सूट्स में तो भाई टाइम से आ जाया करो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग की वजह से मैं लेट स्टार्ट करता हूँ लाइव स्ट्रीम, ठीक है, 1:15 पे। नहीं तो मेरा बच्चा चले तो मैं 12 बजे स्ट्रीम कर लूँ, बट कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम लोग स्कूल गए होगे, इसलिए भाई तुम लोगों की वजह से मैं 1:15 पे स्ट्रीम करता हूँ, इसलिए भाई टाइम पे आ जाया करो, ठीक है। बियॉन्ड दी टू सूट्स में आ जाया करो भाई टाइम पर, क्योंकि भाई वो अच्छी गेम है बहुत ही, जो अच्छी गेम होती है मैं उस गेम की स्ट्रीम में टाइम से आने के लिए कहता हूँ तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। बाकी ड्रैगन टोमा तो मैं आज फाइनली खत्म कर देंगे लोंडो शाम को, उसे झेलना नहीं पड़ेगा उस गेम को। और भाई पेंडिंग गेम थी इसलिए खेलना पड़ा मैं सच में, और लिस्ट वाली गेम होती तो जब भी खेलना पड़ता। लिस्ट में तो अच्छी बुरी सारी गेम्स ऐड कर रखी मैंने। तो क्या कह रहे थे भाई? अरे BMG भाई हंस रहे हैं अंश भाई, अरे BMG भाई बॉम्ब गिर जाए स्कूल में बहन चोद। अंश भाई तो और खतरनाक सोचते हैं बहन चोद, अब बॉम्ब गिर जाए बहन चोद, हैं बॉम्ब गिर जाए बहन चोद, और बॉम्ब गिर जाए तो बहन चोद जो कोई रश हो बहन चोद स्कूल में बहन चोद उसको तुम बचाओ हैं। अंश भाई बताऊँ क्या सोचते थे? बॉम्ब गिर जाए स्कूल में, ठीक है, और फिर बहन चोद अंश भाई बहन चोद स्कूल की पैंट के ऊपर लाल कलर की चड्डी पहन के जाए, और जो खूबसूरत लड़की हो स्कूल की बेंचों से बचाएं जाके, ठीक है। फिर वो लड़की बोले कि अरे अंश तूने बाहर चड्डी क्यों पहन रखी है ऐसे? अंश भाई बोले अरे ताकि शेप दिख सके ना, इसलिए मैंने बाहर चड्डी पहनी है लाल कलर की पैंट के ऊपर। अंदर नहीं पहनता मैं चड्डी, बाहर पहनता हूँ, ऊपर पहनू ना क्योंकि मैं तो क्या स्कूल के बाहर क्या हालत होता है उन बच्चों का, इन बच्चों का, अच्छा जिनका बता रहा हूँ भाई, अब वो हीरो बन के घूमते हैं भाई, तुम लोगों को बताता तो हूँ। हैंचो ऐसे रंग लग गया उन चूतियों को। हालांकि एक जमाने में मेरे घर आते थे भोसड़ी वाले, कंप्यूटर में गेम खेल के जाते थे, मैं भी चूतियों की तरह लाता था भाई। बचपन में बड़ा चूतिया था मैं, सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को, बड़ा सीधा था मैं, उससे बोलता हूँ भाई मैं ये बात। क्यूट तो था भाई, चूतिया था बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई। बचपन वाले कुणाल से गुस्सा आता है मेरे को सीरियसली। अच्छा था बचपन वाला कुणाल, हरामी नहीं था, कमीना नहीं था, जब भी तो लोग फायदा उठा जाते थे। सीधा था, क्यूट था, मैं भोला वाला बच्चा था। तुम लोगों को फोटो दिखाऊंगा ना, तुम लोगों को पता चल जाएगा अरे BMG भाई कितने क्यूट थे बचपन में, बट भोले वाले लग रहे हैं बड़े शक्ल से। तो हाँ भाई भोला वाला मैं सीरियसली। बेंचो साला बेंचो हर किसी को दोस्त समझता था मैं अपना बचपन में, कि अरे ये मेरा दोस्त है, और सारे जाड़ गुजर के बच्चे सारे सियाणे सियाणे मोटे ताजे से कहते थे हाँ भाई तेरे दोस्त है, आजा तेरे कंप्यूटर में गेम खेलेंगे घर जाके, चल आजा तेरे घर पे जाके गेम खेलेंगे, कुणाल मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक है। भाई आते थे और मैं कंप्यूटर ऑन करता था, मैं कहता था भाई तू स्टेयरिंग संभाल और मैं ना आगे बैक और फॉरवर्ड संभालूंगा, एस्केलेटर और ब्रेक संभालूंगा, दोनों मिलके खेलेंगे गेम। भाई जीटे खिला रहा हूँ, टेकन खिला रहा हूँ उन्हें, बेंच मोस्ट मोटेड खिला रहा हूँ। और बेंच अब किसी बहन के लोड़े को बोलूँ ना भाई तूने
गेम खेली थी मेरे कंप्यूटर में, मैंने तेरे को सबसे पहले कंप्यूटर में गेम खिलाई थी। मतलब तेरी औकात भी नहीं थी उस टाइम पे कंप्यूटर लेने की। भाई यहाँ पे किसी के घर कंप्यूटर नहीं था भाई, सीरियसली। यहाँ पे पूरा गाँव वाला इलाका था भाई। और सबसे बड़ी बात, इतना किसी के घर कंप्यूटर नहीं आता इंडिया में इतनी छोटी उम्र में, अमीरों के घर आता है बस। मैं भी अमीर ही था भाई बचपन में, ये बता रहा हूँ मैं, झूठ क्यों बोलूँ। मैं जब अमीर था तो भाई मैं बोलता हूँ जब मैं अमीर था, ठीक है। तो भाई जब ही तो मेरे घर कंप्यूटर आ गया था जब मैं 5 साल का था। तो भाई साले 10-10 गाय भैंस पालते भूसरी वाले, ठीक है, कंप्यूटर नहीं ले सकते। तो ना भाई मैं इनको ले आता था, कंप्यूटर पे गेम खिलाता था। और मैं किसी को बोल दूँ ना भाई मैंने तेरे को कंप्यूटर पे गेम खिलाई थी बचपन में, तो कहेंगे अरे भाई तूने कब खिलाई भाई, मुकर जाएंगे। कहेंगे और क्या हो गया भाई, हमारे घर भी कंप्यूटर है। अब मैं ना भूसरी तुम्हारे कंप्यूटर घर पे, अब मैं ना भूसरी वालों तुम्हारे घर पे कंप्यूटर पहले था जब मैंने गेम खिलाई थी। साले किसी को कोई बोलना है तो बोल लो भाई कि मैं बेंचो औकात दिखा रहा हूँ, मैं एटीट्यूड खा रहा हूँ कि मेरे घर पे कंप्यूटर था बचपन से। भाई मेरे को गुस्सा आता है भाई ऐसे बंदों पे। बेंचो हमने हमने सिखाया जिनको चलना, वो भोसड़ी वाले अब हमें बता रहे हैं कि भागते कैसे है। क्या डायलॉग मार जाता हूँ मैं भी कभी कभी, उससे बनाता हूँ क्या, नहीं बचाऊंगा स्कूल वालों को, मरने दो। सही बात है अंश भाई। भाई मेरे को तो स्कूल की लड़कियां भी गांडू लगती थी, मैंने रील तो लगाई थी इंस्टा पे बेंचो स्टोरी। बेंचो मेरे को तो अपनी क्लास की लड़कियां सारी गांडू लगती थी, कॉलेज की भी अपनी लड़कियां गांडू लगती थी मेरे को, कॉलेज की लड़कियां भी गांडू लगती थी क्लास की, ठीक है। पूरी कॉलेज की कह रहा हूँ मैं तो, पूरी स्कूल की भी लड़कियां मेरे को गांडू लगती थी, फिर इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे को आज तक कोई लड़की ढंग की नहीं दिखी। और भोसड़ी वाले उसमें भी बेंचो बावले होते रहते कि अरे भाई वो लड़की अच्छी लग रही है भाई, भाई वो लड़की भाई तेरी भाभी है देख, भोसड़ी का भूती है सारे। लौंडो आज की स्ट्रीम में, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर की स्ट्रीम में, फिर किसी एपिसोड में। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी इन दी नेक्स्ट स्ट्रीम, सी इन दी नेक्स्ट एपिसोड। नहीं यार, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो लौंडो आज की स्ट्रीम में, आज के एपिसोड में बस इतना ही, क्योंकि हमारी गेम भी कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, एंड हो चुका है, एंड हो चुका है हमारी गेम का, समाप्त हो चुकी है हमारी गेम। तो इसलिए आज के एपिसोड में, आज के स्ट्रीम में बस इतना ही, क्योंकि हमारी गेम भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए अब ये स्ट्रीम को, ये एपिसोड को भी यहीं कंप्लीट करते, एंड करते, खत्म करते हैं। तो ठीक है लौंडो, अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर किसी गेम के एपिसोड में, फिर किसी गेम की स्ट्रीम में। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी इन दी नेक्स्ट स्ट्रीम, सी इन दी नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ। तो समझ के अच्छे से देख के सारा कंटेंट देख के सब्सक्राइब करने का, ठीक है। बाकी ये स्ट्रीम को लाइक एंड शेयर करना, ये एपिसोड को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना। शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। बाकी मेरे को अभी वॉचिंग 36 नजर आ रही है और 113 व्यूज क्रॉस नजर आ रहे हैं, ठीक है। चैट रेट 0 दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ठीक है लौंडो, ओके, बाय 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 बाय। अच्छा तो हम मिलते हैं, कब मिलोगे? तुम लोग तो ऐसे कहोगे नहीं कि कब मिलोगे भीम जी भाई, तुम लोग को तो इंटरेस्ट है ही नहीं, है ना। एलोय थोड़ी हो तुम लोग जो तुम लोगों को मेरे में इंटरेस्ट होएगा, ना 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 भाई। मिलेंगे हम बियॉन्ड दी टू शूज के फाइनल एपिसोड में। एपिसोड कौन से एपिसोड में मिलेंगे देख लेना तुम लोग खुद, स्ट्रीम शेड्यूल कर रखी है मैंने, ठीक है। मैं नहीं बता रहा, जाओ रोडो, मैं नहीं बता रहा आज, ठीक है। हमेशा बताता रहता हूँ, चूते की तरह भूखता रहता हूँ। सारी स्ट्रीम मैंने शेड्यूल कर रखी है, एपिसोड्स अभी बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन जाके ऑन कर लेना, ठीक है। ओके बाय बाय लोडो, गुड नाइट, अच्छे से सोना, ठीक है। मूड अच्छा करके सोना चाहिए इंसान को, इसलिए मैं तुम लोग का मूड बनाता हूँ भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मूड बनाता हूँ तुम लोग का, भैंचो मैं डोरा फती हूँ क्या, तुम लोग का मूड बनाता हूँ? नहीं नहीं भाई, इसलिए मैं तुम लोग का मूड अच्छा कर देता हूँ। ना 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 ना, ये भी ठरक वाली बात लग रही है, ना ना ना, मैं मूड नहीं ठीक कर देता हूँ मैं तुम लोग का मूड, ठीक है। तुम लोग को हंसा देता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे सपने देखो, ठीक है, ठीक है लोंडो। ओके बाय बाय, ठीक है। अब मूड नहीं बनाते तुम्हारा बीएम जी भाई, ठीक है। कहीं तुम लोग बोलो अरे बीएम जी भाई आप तो हमारा मूड बना देते हो, अरे बीएम जी भाई ऐसे छाती पे हाथ रगड़ने लगो तुम लोग, अरे बीएम जी भाई मूड बना दो ना, बीएम जी भाई आज मूड नहीं बना, आज मूड बना दो यार, अरे बीएम जी भाई बना दो ना मूड, आप ही तो कहता आप हमारा मूड बना देते हो, आज भी बना दो ना, मटक के दिखा दो थोड़ा। तो ठीक है लौटो, अब ये स्ट्रीम ही एपिसोड ये एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है लौटो, बाय बाय।
बीएमजी भाई मूड बना दो। अरे भाई, अरे अंश भाई नहीं यार, बीएमजी भाई मूड बना दो ना। अंश भाई ऐसे कह रहे हैं, वर्मा भाई हंस रहे हैं, वर्मा भाई। हाँ भाई तुम हंस रहे हो ना, इससे पहले तुम और कुछ बोलो, मैं ये स्ट्रीम या एपिसोड यहीं बंद कर देता हूँ, मुझे पता है, नहीं तो भाई तुम नेक्स्ट लेवल बात बोलोगे कुछ कि बीएमजी भाई जरा यार, जरा बीएमजी भाई खट्टी लस्सी चकलो। नहीं भाई नहीं, मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ भाई, तुम लोग इससे पहले मेरे साथ अश्लील होना स्टार्ट करो। नहीं नहीं भाई, मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ा भैया हूँ तुम लोग का, बड़ा भैया, ठीक है। हाँ दोस्त भी हूँ तुम लोग का, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेंच बड़े भैया को अपना छोटा भैया पकड़ा दो हाथ में। ठीक है भाई, बाय बाय, बहुत होगी बकचोदी। गुड नाइट रोडो, हंसा दिए ना, अब अच्छे से सोना, ठीक है। मूड अच्छा रहेगा पूरा दिन, टाइम पे आ जाना बियॉन्ड द टू शूज की स्ट्रीम में। बाय बाय, हंसते रहो, ऐसे क्रिकेट आते रहो और आते रहो स्ट्रीम पे। बाय बाय।